हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी पॉलिटी की घटना चक्र। 2023 का ये एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें डेली बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और साथ में पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊँगा। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने से आपको बेनिफिट ये भी होगा कि वहाँ डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए, आज फर्स्ट चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से हम शुरू करते हैं। एंड डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये पूरी घटना चक्र में कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 टू 1853 एंड देन आर्टिकल्स द एक्ट्स पास्ड बाय द ब्रिटिश क्राउन। नाउ ब्रिटिश जो पॉलिसी थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए कमर्शियल बॉडी आई थी इंडिया में, ठीक है, एज अ कमर्शियल बॉडी आई थी जिसका काम था ट्रेड करना। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपैंड करती गई, 1757 में बैटल ऑफ पलासी, देन 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद धीरे धीरे अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कंपनी ने बढ़ाया और अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर करना शुरू किया। कैप्चर करने के तरीके पे दो तीन होते थे, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, रिंग फेंस पॉलिसी एट्सेट्रा। तो धीरे धीरे कंपनी एक्सपैंड करती गई और ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले कमर्शियल बॉडी थी, धीरे धीरे सारे फंक्शंस उससे कमर्शियल बॉडी के ले लिए गए एंड लेटर इट बिकेम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। ये ओवर द टाइम हुआ और इसी बेसिस पे एक्ट्स को डिवाइड किया गया है। नाउ 1857 एक बहुत मार्किंग पीरियड था एक्ट्स के हिसाब से, क्योंकि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, जिसे कि हम कहते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब 1857 में रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश कंपनी पूरी तरह से हिल गई थी एंड इसके बाद इन्होंने जो भी एक्ट्स लेके आए वो सारे बेस थे जो भी 1857 के टाइम्स में रिवॉल्ट हुआ था उसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत से ज़मींदार, बहुत से राजा थे, जैसे राजा ऑफ बनारस है, राजा ऑफ ग्वालियर, इन सब ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के जो एक्ट है वो कम्प्लीटली डिवीज़न बेसिस पे आए कि उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडियन सोसाइटी को। तो वो तो खैर हिस्टोरिकल पार्ट है, बट बेसिक डिफरेंस ये था, इसीलिए 1858 को यहाँ पे मार्क किया गया है पीरियड ऑफ डिफीजन। यहाँ से पहले के जो भी एक्ट्स थे दैट वे फॉर द कमर्शियल पर्पस एंड थोड़े बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे जितने भी एक्ट्स आए वो प्योरली कंट्रोल कर रहे थे पूरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात हम हिस्ट्री की जब घटना चक्र करेंगे तब उस पर मैं इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं एंड एमसीक्यूज करते हैं। नाउ कंपनी रूल के टाइम पे 1773 टू 1853 सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसमें द एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड जितनी भी दो प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास और बॉम्बे, वो सबसर्वियंट हो गई बंगाल के, मतलब बंगाल वॉज ऑन द टॉप एंड बंगाल के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी एंड देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी आ गई। गवर्नर जनरल वॉज प्रोवाइडेड विथ एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 to assist him in the military and non-military decisions which would have been taken by majority of the council. Governor General would vote only in the case of tie. Now regulating act का एक फीचर था, सुप्रीम कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया गया इस एक्ट से। एंड देन सी सुप्रीम कोर्ट विच हैज चीफ जस्टिस एंड 3 other judges was established at फोर्ट विलियम्स इन कलकत्ता इन 1774. Now फोर्ट विलियम्स जो था कलकत्ता में, इसका इनिशियल यूज़ था जो भी सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स थे उनकी ट्रेनिंग का यूज़ था, बट लेटर इसको सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए बिल्डिंग को यूज़ किया गया। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड ब्राइब फ्रॉम द इंडियंस। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ओवर द कंपनी थ्रू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मेनली इस एक्ट का क्या था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। Board of Control was created for political matters and Court of Director was control the commercial affairs. Next था Act of 1776 provided that the Governor General could overrule his council in matters of importance affecting the safety, peace or interest of the empire. Governor General
was granted the power of commander-in-chief. Lord Cornwallis was the first governor general to enjoy these power. Cornwallis सही से काम नहीं कर पा रहे थे. That is the reason why the act was brought, ताकि a greater control of governor general could be exercised. Now, Charter Act of 1793 further extended the commercial monopoly of the company for another 20 years, and then 1813 तक वो commercial monopoly रही थी. 1813 में बेसिकली वो बंद हो गई थी, बट इट वॉज अलाउड फॉर ट्रेड ऑफ टी विथ चाइना. एंड 1833 के एक्ट में कम्प्लीटली कमर्शियल जो भी प्रिविलेजेस थे वो ख़त्म कर दिए गए थे कंपनी के. नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द प्रोविजन ऑफ 1 लाख रुपी ईयर टू बी स्पेंट ऑन द एडुकेशन. ऑल्दो दिस 1 लाख रुपीज वॉज नेवर अलॉटेड, ठीक है, बट प्रोविज़न था इस एक्ट में. इट एंडेड company's monopoly over trade, although the monopoly of trade of tea and trade with China continued. ये अभी बताया मैंने आपको. The Charter Act of 1833 made the Governor General of Bengal as the Governor General of India and vested in him all the civil and military powers. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. It ended the activity of East India Company as a commercial body, which purely became an administrative body. A legal member was included in the executive council of the governor general. Macaulay was the first legal member, ठीक है. Law Commission first time, in other words, was established in 1833, which was presided by Macaulay. Now, Charter Act of 1853 separated for the first time legislative and executive function of the governor general council. Very important, ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में. It established a separate Indian Legislative Council for lawmaking. It introduced an open competition system for election and recruitment of civil servants. Now, चलिए क्वेश्चंस करते हैं. In which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court of Calcutta? अभी हमने पढ़ा, it was the Regulating Act of 1773. Important point here is Sir Elijah Impey was the first Chief General of the Supreme Court. Now, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the following statement is correct? Supreme Court at Calcutta was established by Regulating Act of 1773. बिल्कुल सही है. And Leicester was the first Chief Justice. तो गलत. अभी हमने देखा Sir Elijah Impey was the first Chief Justice. So 1 is the correct answer. Now हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है. Establishment of a Board of Control. Establishment of Supreme Court we know was from the Regulating Act. Permission of English missionaries to work in India. And C का भी हमारा जो था वो Charter Act of 1813 में था. Also 1 lakh rupees was provided इसी एक्ट में था. And appointment of a law member in Governor General Council ये था हमारा Charter Act में. And the first law commission का member was Macaulay. Now the correct answer according to this is B. ठीक है. Now next question. Which of the following led to the introduction of English education in India? Charter Act we know अभी पढ़ा हमने. रुपीज़ 1 lakh was approved. General Committee of Public Instruction in 1823 and Orientalist and Anglicist controversy. Basically इस controversy का यही मतलब था कि some of the British members were supporting the use of vernacular language और लोकल लैंग्वेज एडुकेशन के पर्पस के लिए. बट द एंग्लिसिस्ट वेयर प्रेफरिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज. दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पीपल दैट वेयर टू सर्व द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है. 1 and 3 तो हमें पता चल गया. एंड 2 इज़ ऑल्सो द आंसर. ठीक है. 1823 की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं. जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी to grant 1 lakh rupees. ठीक है. The Orientalist Anglicist controversy was regarding the nature of education. अभी मैंने बताया है आपको. ठीक है. H.T. Prinsep and H.H. Wilson supported the Orientalist education and Anglicists were led by Charles Trevelyan who advocated for imparting Western education through medium of English. अभी मैंने आपको इसका बेसिक मतलब बताया. By which act the British Parliament has abolished the monopoly of East India Company in trade in India except trade tea and China trade. Now correct answer is 1813.
1833 में वो भी एंड कर दिया गया था। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड? अभी हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1830, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। बिल्कुल करेक्ट, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। asserted the sovereignty of British crown over the Indian territories held by the company, and revenues of India were now controlled by the British Parliament. So this one is wrong, 1 and 2 is correct. जो हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज इट वॉज नॉट कंट्रोल्ड बाय द 1813 एक्ट. Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country? So करेक्ट आंसर इज 1833 का एक्ट, ठीक है. सेक्शन 87 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चार्टर एक्ट, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में. इट स्टेटेड दैट नो पर्सन इन इंडिया और क्राउन वुड बी डिबार्ड फ्रॉम एनी प्लेस, पोस्ट और सर्विस सब्जेक्ट टू द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और कलर ऑफ और एनी ऑफ देम, ठीक है, ध्यान रखना आप. नाउ इसी के अंदर जो सबसर्वियंट हमारे थे, द एक्ट विच वे पास बाय द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है. द नेम 1858 के एक्ट में द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रीनेम्ड एट वॉइस रॉय एंड लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक है. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केम टू एन एंड, ठीक है, जो हमारा 1784 के पिट्स एक्ट से इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल these were abolished and a new post of secretary of state was created by the 1858 act, ठीक है, ध्यान रखना. He was assisted by a council of 15 members. He received the powers so long enjoyed by the Court of Director and Board of Control. अभी बताया मैंने. The Council of India was to be advisory in nature and in most cases the initiative and the final decision remained with the Secretary of State. Now Council Act of 1861 initiated the participation of Indian representatives in law making process. The act restored the legislative power, making and amending laws to the provinces of Madras and Bombay, thus initiating process of decentralization. तो centralizing tendencies हमने देखी थी by the regulating act of 1773 where the presidency of Bengal was at the topmost and Bombay and Madras were made subservient by the 1773 regulating act. 1861 में the powers were restored, तो द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड. आई होप आपको समझ आया होगा. द एक्ट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेज इन केस ऑफ इमरजेंसी. सो ऑर्डिनेंसेज आपने सुना होगा, दीज आर अंडर आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1, 2, 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट के पास पावर होती हैं. सो दीज पावर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एयर ओनली, विच वी आर नॉट टू बी रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 months. Council Act of 1892 increased the number of non-official members both in central and provincial legislative council, but maintained the official majority in them. The Indian members were granted the right to ask question and discuss the budget in the legislative council, dissolved by the Act of 1892. Council Acts 1909 is also known as Parliamentary reforms, ठीक है, provided for the association of India with the executive council of Viceroy and Governor. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. इंपॉर्टेंट है, याद रखना नाम. सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. He was appointed as a law member. The function and size of legislature both at center and in provinces were enlarged. एक बात हमेशा ध्यान रखा, किसी भी एक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ता गया, जैसे 1773, उसके बाद हम काउंसिल एक्ट 1861 देखा, 1892, फिर 1909 का जो था मॉर्लिमेंटो, सब में जो मेंबर्स थे एंड सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की, काउंसिल की, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हुई, क्योंकि इंडियंस वेयर कॉन्स्टेंटली प्रोटेस्टिंग. द मॉडरेट लीडर्स जो थे, हमारे मॉडरेट लीडर्स थे, दे वेयर कंटिन्यूसली प्रोटेस्टिंग फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि इंडियंस के रिगार्डिंग जो लॉ है, इंडिया के लिए जो लॉज हैं वो इंडियंस बनाएंगे. तो अंडर द ड्यू प्रेशर ऑफ द मॉडरेट लीडर्स, द ब्रिटिश टाइम टू टाइम उनको रिफॉर्म लेके आने पड़े, एंड दैट इज़ वाई दिस नंबर ऑफ सीट्स वेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. So this is the basic idea about this.
Now, Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join Viceroy's Executive Council. He was appointed as a law member. The function and size of legislature, both in center and provinces, were enlarged. The member of council were given right of discussion and asking supplementary question. The act provided for separate electorate for Muslims. Separate electorate का मतलब था कि only the Muslim population can elect the Muslims. ठीक है, इलेक्टोरेट का यही मतलब था. Hence, Lord Minto came to be known as father of communal electorate. Government of India Act 1919, Montego claims for reform. For the first time adopted direct election system. But direct election system भी सबके लिए नहीं था, not for all. ठीक है, selected categories के लिए इलेक्शन सिस्टम था जिनके पास फ्रेंचाइज था, और मतलब those who can vote. Principle of communal representation was extended by providing separate electorate for Sikhs, Indian Christians, European, Anglo-Indians. Second most important feature was bicameralism. सेंट्रल लेवल पे आ गया. सेपरेटेड द सब्जेक्ट, जो प्रोविंसेस के सब्जेक्ट थे उसको सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल एंड प्रोविंस सब्जेक्ट में. बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर कुड मेक लॉ फॉर होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. डायरकी आ गया प्रोविंसेस में. प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो कि प्रोविंस के सब्जेक्ट थे, फर्दर उनको ट्रांसफ़र मतलब डिवाइड कर दिया गया ट्रांसफर्ड में एंड रिजर्व्ड में. रिजर्व सब्जेक्ट्स वे दो, जिसमें गवर्नर जनरल थे उनकी जो एसेंट थी वो फाइनल थी. ठीक है. अंडर दिस एक्ट अ कमीशन वॉज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर 10 years विच विल रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट एंड प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट. November 1927 में the British government announced the appointment of a 7-member statutory commission under the chairmanship of Simon, which was also called Simon Commission. ठीक है, to review the 1919 का कौन सा Montego Chelmsford Reform. 1919 का जो एक्ट था इसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन वॉज एड. एक फैक्ट याद रखना साइमन कमीशन के रिगार्डिंग कि जब साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, और प्रोटेस्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि नो इंडियन मेंबर वॉज इन दी कमीशन. तो उस टाइम पे लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड उनकी डेथ हुई थी इसी प्रोटेस्ट के टाइम पे, व्हेन द प्रोटेस्ट वाज मेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन. नाउ द कमीशन वाज हेंस कॉल्ड साइमन कमीशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टेड ऑफ प्रोविंसेस and princely state as unit. It introduced diarchy at center and abolished the same at provinces. डायरकी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना कि जो डायरकी थी, ठीक है, एट प्रोविंस को प्रोवाइड की गई थी एक्ट ऑफ 1919 में, एंड सेंटर में ये डायरकी आई थी 1935 में. ठीक है, एंड 1935 में प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी गई थी. नोट्स में लिख लेना अपने, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है, ये आता है एग्जाम में. ठीक है, to introduce diarchy at the center and abolish the same in provinces, provide for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. Principle of communal representation was further extended by providing separate electorate for scheduled caste, women and laborers. A federal court was set up in 1937 through this act. 1935 के एक्ट में बर्मा was also separated from India. ठीक है, एंड बर्मा क्यों ब्रिटिश ने एक्सपैंड किया, फॉर टिम्बर नीड्स, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन था इट हैज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, थिक फॉरेस्ट है, एंड टिम्बर वॉज ऑफ ग्रेट यूज टू द ब्रिटिश. क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज. एक्सपेंशन हो रहा था रेलवेज का. ठीक है, रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर, एंड जहाँ से मैनचेस्टर गुड्स और फिनिश्ड गुड्स जिसको बोला जाता था वो बन के आते थे. तो बर्मा वॉज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ब्रिटिश, जहाँ से टिम्बर प्रोवाइड होता था. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ये कनेक्शन आपको. नाउ इट इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म. कौन सा, 1935 का एक्ट, इन 6 out of 11 प्रोविंसेस. नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 declared India to be an independent and sovereign nation on 15 August 1947 and पाकिस्तान का 14 August 1947 Independence Day. It abolished the office of Viceroy and a Governor General was appointed for each dominion. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. Now इससे related questions देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब तो.
जितना डिस्कशन हमने कर लिया है. रेफरेंस टू इंडियन काउंसिल एक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट total members of the executive council of the general became 7. For legislative work, number of additional members could be minimum of 6 and maximum of 12. No differentiation was made between state and central subject. ये डिवीजन तो हमारा बाद में ही किया गया था. तो थ्री तो करेक्ट है, 2 इज ऑल्सो करेक्ट, बट 1 इज नॉट करेक्ट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 2 and 3. 1 is not correct. Read the following statement with respect to the Indian Council Act of 1892 and choose the correct option. It was implemented on 20th June 1892. Out of 24 members, 5 were non-government members. ठीक है, तो this question is a bit disputed. ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट एक हमारा रॉन्ग है. एग्जैक्ट डेट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ रॉन्ग. आंसर हिसाब से 2 and 3 होना चाहिए, बट नन ऑफ द ऑप्शंस में दिस इज़ गिवन. ठीक है, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. The British Parliament passed the Indian Council Act in 1892. It gathered the royal assent on 20th June and commenced on 3rd Feb. तो इधर ऑप्शन में हमें दे रखा है 20th June, which is wrong. ठीक है. The number of additional members of elected to the Governor General's Council was increased from 10 to maximum of 16 members. ठीक है. Thus, as per rule of this act, in these conditions, additional 6 members were official, 10 were non-official. In non-official member, both Indian and European were included. So the statement 2 is wrong, and this statement 3 is also wrong. तो disputed question है. ये explanation को आप ध्यान में रखना in order to. वैसे इतना ज़्यादा डीप स्टडी करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं है, इतना डिटेल में किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ. तो इट्स बेटर टू अवॉइड एंड इट्स बेटर टू नो द की फीचर्स ऑफ द एक्ट. दैट इज़ इनफ. की फीचर्स बस, ज़्यादा नहीं घुसना है किसी टॉपिक में, क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट. 1892 का एक्ट है, अभी पढ़ा हमने. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश इंडिया. अभी पढ़ा 1909 में, एंड इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड 1919 में, फिर एक्सटेंड हुई 1935 में, क्योंकि द ब्रिटिशर्स वर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. Now next question. Act of 1909 associated with separate electorate for Muslims. ठीक है. By which of the following act was a federal court in India created? None of the above. Federal court was created by the act of 1935. ठीक है. Federal court was established in India which of the following year? 1935 का एक्ट में मेंशन था, एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1937. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंट्रल लेवल. कंफ्यूज मत होना 1919 में, 1935 है, क्योंकि सेंटर में 1935 में इंट्रोड्यूस हुई थी, एंड प्रोविंसेस में इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1919. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी एट द सेंट्रल लेवल. 1935. Which of the following are the principal features of the Government of India Act 1919? It introduced the diarchy in executive government of the provinces. बिल्कुल सही है. It introduced a separate electorate for Muslims. गलत है. Separate electorate were introduced in 109 by the Morley-Minto reforms. And devolution of legislative authority by centre to the provinces. ठीक है. 1 and 3 are correct. Now, in context of the Indian history, the principle of diarchy refers to. ठीक है. डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू प्रोविंसेस इन 2 कैटेगरीज. 2 कैटेगरीज कौन सी थी? जैसे बताया मैंने आपको, रिजर्व एंड ट्रांसफ़र सब्जेक्ट. तो रिजर्व सब्जेक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, इट वाज हेडेड बाय गवर्नर जनरल, सच एज पुलिस, जेल, जस्टिस, फाइनेंस, इरीगेशन वे टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर. अभी बताया. एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. एंड जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो ट्रांसफर्ड में डाल दी गई, सच एज एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वे आर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल. चलिए, ये तो रही पुराने टाइम्स की एक्ट की बात. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर आज की डेट में इज इट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट और अ स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, इसका आंसर बताइए. देखते हैं कितने इसका सही आंसर बताते हैं. फर्स्ट कमेंट, राइट कमेंट. द करेक्ट कमेंट विल बी पिन्ड. ठीक है, इस वीडियो में.
In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserved and transferred. What were the following were treated as reserve subject? अब भी हमने डिटेल में देखा कि पुलिस वॉज इंक्लूडेड, हमारा लैंड रेवेन्यू वॉज इंक्लूडेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंक्लूडेड. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी ट्रांसफर्ड लिस्ट में थी. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज 1, 3 and 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो 1919 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई. डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस्ड. इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. 1919 के एक्ट में इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल हुआ. इट कंसिस्टेड ऑफ एन अपर हाउस, जिसको आज की डेट में अपन राज्यसभा बोलते हैं, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अ लोअर हाउस नेम लेजिस्लेटिव असेंबली. लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं. Council of State was composed of 60 members, of whom maximum 20 members could be official in accordance with Section 18 of the Government of India Act. The lower house was called as Central Legislative Assembly, and under Section 19 of this Act, original provided for 140 members. ठीक है, ये उतना important नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following act introduced a bicameral legislature? By Act of 1919. तो कुछ important चीज़ें याद रख लो 1919 के एक्ट में. डायरकी एट प्रोविंस, ठीक है. उसके बाद में इलेक्शंस वेयर इंट्रोड्यूस, मतलब कि वोटिंग राइट टू इंडियंस, ठीक है. उसके बाद में बाईकैमरलिज्म, दोनों हाउसेस वो इंट्रोड्यूस हुए थे. नाउ Montagu claims for reform of 1919 recommended granting voting rights to all the women above age 22. बिल्कुल गलत. मैंने बताया लिमिटेड लोगों को फ्रेंचाइज मिला था 1919 में. तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एंड द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट इन लेजिस्लेचर. तो 2 इज करेक्ट, 1 इज नॉट करेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Government of 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. बिल्कुल सही है, प्रोविजन था. एंड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडियन वेयर मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियंस. बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शंस एट द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वेर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? नाउ हमारा 1926 एंड 1945 के इलेक्शन वे आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द 1919 एक्ट. ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ, अब भी बताया, 1935 एक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी? तो एक्ट ऑफ 1935, ठीक है. क्यों? द एक्ट वेस्टेड द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंसेस इन द गवर्नर एंड ऑफ द सेंटर इन द गवर्नर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन. अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है इसको. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ऑल्सो दिस एक्ट इज नोन एज ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो बेस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज़ टेकन फ्रॉम दिस एक्ट ओनली. ठीक है, कैसे है? द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज मेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, डिवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रिप्लेस डायरकी इन द प्रोविंसेस विद द डायरकी एट सेंटर. ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी रिस्पॉन्सिबल. हाउएवर दिस फेडरेशन वॉज नेवर मेड, बट देयर वॉज अ प्रोविजन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन. ओके, now which of the following was not a salient feature of government of India act? The act provided for all India reservation. बिल्कुल फेडरेशन सही बात है. रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वेयर एलोकेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल गलत है. द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स वेयर अंडर द गवर्नर जनरल, नॉट द प्रोविंसेस. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मार्क हुई, हाँ भाई मार्क हुई, क्योंकि प्रोविंसेस में डायरकी हटा दी गई. And it abolished diarchy at the provincial level and introduced it at central level. बिल्कुल सही. So B is the correct answer. This is not a silent feature. A federal system and a diarchy at center was introduced by Government of India Act 1935. The provision for the establishment of all India Federation was included in the Government of India Act. By which of the following act provided for the federal polity in India? 1935 का act. Repeated questions हैं.
Now, in Federation Establishment of Government of India Act, residuary powers were given to whom? To Governor General. The federal system proposed under Government of India was a Federation of India. Which of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act? Indian Constitution, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस, ठीक है बिल्कुल सही है. फेडरेशन के लिए स्कीम थी एंड नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं बात नहीं की गई थी, तो दिस वन इज करेक्ट. वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? क्यों? क्योंकि सिंपल है, इट वॉज द मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? 1935 का एक्ट. और एनेक्सेशन कब हुआ था बर्मा का? इट वॉज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डफरिन. डफरिन के टेन्योर में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी एंड 1885 के अराउंड 86 के अराउंड बर्मा को एक्वायर किया गया था, ठीक है, बर्मीज़ वॉर के बाद. तो ये ध्यान रखना. तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है. अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है. अंटिल देन, थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 2 और चैप्टर 2 ऑफ द पॉलिटी घटनाचक्र 2023. ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the information that is given and then we will solve the MCQs. Now let's start the chapter. Now the first formal demand for Constituent Assembly was made by the Swaraj Party at the conference in Ranchi held on May 1934. So it means that Swaraj Party ने सबसे पहले demand की थी for a formation of Constituent Assembly to frame the Constitution. The idea of Constituent Assembly was put forward first time by M.N. Roy in the year 1934. Now M.N. Roy is an important figure, ध्यान रखना आप. He is the founder of Communist Party of India. CPI was founded in year 1925. Also he was the author of the journal named Vanguard, ठीक है. It was a communist journal, तो ये भी आप ध्यान रखना. M.N. Roy is an important figure. The Indian National Congress officially demanded a Constituent Assembly to frame the Constitution of India for the first time in the year 1934. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of INC, declared the Constitution of India must be framed without outside interference by Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise. Demand was finally accepted in the August offer. This question is important, that the first time the demand of Constituent Assembly was accepted. It was in the August offer. The Constituent Assembly was constituted under the scheme formulated by the Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission Plan came in the year 1946, in which there was a provision to make a Constituent Assembly. Number of representatives from provinces was based on their population, one representative per 10 lakh people. So here with सारी information is related about the elections and all that were conducted. Also Constituent Assembly के जो elections थे to elect the members, that was on the basis of Act of 1935, Government of India Act. This is important thing. Now Constituent Assembly was a result of indirect elections. The elections was not based on adult franchise. According to Government of India Act, voting rights were limited based on the tax, education, property. The Viceroy invited an elected representative for the first meeting of the Constituent Assembly on 9 December 1946. The meeting was presided over by Dr. Sachidanand Sinha as temporary president. Later on 11 December 1946, Rajendra Prasad was unanimously elected as the president of the Constituent Assembly. It took 2 years, 11 months and 18 days. कई स्टेट PSC के एग्जाम्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. It took around 2 years, 11 months and 18 days. It seems that it has not included the day of adoption. ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor. This is important. 26 November 1949, the people of India adopted, enacted and gave themselves the Constitution of India. ठीक है, this is also important. And some of the provisions of the Constitution came in force on 26 November, but the complete
constitution came into force on 26 January 1950. Okay. Now, interim government was formed on 2nd September 1946. However, it did not include any member of the Muslim League. Finally, 26th of October 1946 को 5 members of Muslim Leagues were also included in the cabinet. Now, this is an interim cabinet. जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद. एक बार आप इसको देख लेना. Just glance through it once. And now we'll move straight away to the questions. Who gave the idea of the Constituent Assembly firstly for the formation of Constitution of India? Correct answer is Swaraj Party 1934. Who in the beginning presented the idea of Indian Constituent Assembly in pre-independence day? He was M.N. Roy. The proposal for framing the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by Cripps offer. ठीक है, ध्यान रखना. With reference to proposal of Cripps Mission, consider the following. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as princely states. And second statement is any province which is not prepared to accept the new constitution would have right to sign a separate agreement with British regarding its future status. So, second one is correct. First one is not correct. Okay. And what is the explanation to this? क्रिप्स मिशन की प्रपोजल क्या थे 1942 में? सेटिंग अप ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस. एनी प्रोविंस विलिंग टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन could form a separate union and have a separate constitution. A constituent assembly would be formed to frame new constitution. The assembly would have members elected by provincial assemblies and nominated by princely states. Now, as per cabinet mission plan, the constituent assembly decided to decide allowed members seat in each province. One representative was in ratio of population of 10 lakh. Who among the following person was not a member of cabinet mission? William Wood was not a member. Who were the members of cabinet mission then? Pethick Lawrence, Stafford Cripps, A.B. Alexander. These all were the members. Now, Indian Constituent Assembly was established under cabinet mission. In the interim government formed in year 1946, the vice president of the executive council was Jawaharlal Nehru. Who of the following was not a member of the interim national government formed in the August? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The first interim national government was announced on 24th August 1946. ठीक है, let's see the explanation here. According to the cabinet mission declaration, an interim government was constituted on 2nd September from the newly elected Constituent Assembly. Okay. अनाउंस हुई थी 24 अगस्त 1946 को एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन 2nd September 1946. Now, this is a question based on assertion and reason. According to the Wavell plan, the number of Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. Wavell thought that this arrangement would have avoided the partition of India. So, A is true, but R is not true. ठीक है, they never intended to avoid the partition. ठीक है, let's see the explanation here. 1943 में लॉर्ड वेवल सक्सीडेड लॉर्ड लिलिंगथो as viceroy, made an attempt to resolve the deadlock in India. ठीक है, he proposed restructuring of the Governor General Executive Council which would have balanced the representation of main communities. All the portfolios except defense were to be held by Indian members. ठीक है, the reason is false. Okay, it did not intended to avoid the partition. Which of the following statements are true in relation to Constituent Assembly? It was based on adult suffrage, which is wrong. The assembly was a result of direct election, wrong. Multi-party body, assembly worked through various committee. 3 and 4 seems to be correct. So the correct answer to this is 3 and 4. It was not based on adult suffrage and it was not based on direct elections. Which of the following statements regarding Constituent Assembly are correct? It was not based on adult franchise. बिल्कुल सही है ये. It resulted from direct election. This is false. It was not a multi-party body. It is false. It worked through several committees. So A and D probably are right. So A is the correct answer.
which one among the following is incorrect about the Constituent Assembly? It worked with the help of large number of committees, the most important of them being the drafting committee. बिल्कुल correct. ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. Minorities communities like Christian, Anglo-Indian, Parsis were adequately represented in the. It was elected on the basis of universal adult franchise. This is wrong. Members of the Constituent Assembly who drafted the constitution were, so they were elected by the legislative assemblies of various provinces. ठीक है, 292 members were elected through the provincial legislative assembly and 4 were represented by the chief commissioner province. With reference to Indian history, the members of the Constituent Assembly from the province were elected by the provincial legislative assembly. Now next is, how were the member of Constituent Assembly elected? So they were elected by the provincial assemblies. Who was the first chairman of the Constituent Committee? So Rajendra Prasad. Temporary chairman was Dr. Sachidanand Sinha. Now next is, who chaired the first meeting of Constituent Assembly? Dr. Sachidanand Sinha. The first session of the Indian Constituent Assembly was chaired by Dr. Sachidanand Sinha, and then Rajendra Prasad was made as the permanent chairman. Dr. Rajendra Prasad was elected the chairman of Constituent Assembly in, so the correct answer to this is December 1946. Who was the chairman of the Constituent Assembly of India? Dr. Rajendra Prasad. Who was the president of Constituent Assembly? बिल्कुल repeated question है. Who was first nominated deputy chairman of the Constituent Assembly? Frank Anthony. And Frank Anthony के बारे में information एक बार देख लेना, हो सकता है पूछ ले. He served as a nominated member of the Lok Sabha for 7 terms. Constituent Assembly was established on 9 December. First meeting was held on 9 December. First session held on 9 December. When was Constituent Assembly established? So it was established in December 1946 on 9 December. First session held 9 December. When did the Indian Constituent Assembly meet for the first time? It was on the 9 December. In which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru lay down the objective resolution? So it was fifth meeting of Constituent Assembly. एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे क्या बेस्ड है हमारा? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे हमारा प्रीएम्बल बेस्ड है, एंड प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन अमेंडेड 1 टाइम. कब अमेंड हुआ है? बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नाउ द रिजोल्यूशन फॉर गिविंग ए कॉन्स्टिट्यूशन to India was adopted by the Constituent Assembly on, so the correct answer is 22nd January 1947. So on 22nd January, a resolution for Constitution of India was unanimously adopted by the Constituent Assembly. Now, who proposed the preamble before the drafting committee? So Jawaharlal Nehru, he proposed the objective resolution. Who of the following presented the objective resolution? Jawaharlal Nehru. And he was also the president of INC during the Lahore session 1929, where Purna Swaraj was accepted as a goal of Congress. Now next is, in relation to formation of Constituent Assembly of India, which of the following is or are correct? The resolution of objectives by Nehru affected the making of constitution. बिल्कुल correct है. Preamble fulfills various important and objectives. Correct. People of India order directed the constitution. Head of the state is elected by the people directly. The fourth statement is wrong. 1 2 3 is correct. So fourth statement means head of state कौन होता है हमारा? तो head of state is president of India, and he or she is indirectly elected by the elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha, member of legislative assemblies of state and legislative assemblies of Delhi and Pondicherry. ठीक है, इन यूटीज़. बाकी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन हम प्रेसिडेंट के जब प्रेसिडेंट चैप्टर हम करेंगे वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे.
How many sessions of the Indian Constituent Assembly were conducted for the formulation of Indian Constitution? So 12 sessions were conducted. Mention the correct date of the last meeting of the Constituent Assembly. So last meeting was on 24th January 1950. How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? So it took around 2 years, 11 months and 18 days. Now we have to match the list here. Directly देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए. First Vice President of Constituent Assembly H.C. Mukherjee, and he was also member of Drafting Committee. Drafting Committee which was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. The only Congress member of Drafting Committee K.M. Munshi, representative of Rajasthan Princely State Krishnamachari, chairman of Union Constitution Committee Jawaharlal Nehru. Constitutional advisor at the time of formation of Constitution was Sir B.N. Rao. First draft of Constitution was prepared by Sir B.N. Rao. When was the third reading of the Constituent Assembly started? So the third reading of the Constitution by the Constituent Assembly started on 17th November 1949. The Constitution of India was completed on 26th November 1949. Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1929. Some of the provisions were applicable from 26 November only, and rest of the provisions came into effect on 26 January. Okay? Thus 26 January is considered as a enforcement date of Constitution. Now Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. The Constitution of India was adopted on which date? 26 November. Constitution of India came into force on 26 January. So ये आप ध्यान रखना कि the Constitution was adopted on 26 November 1949 and it came into force on 26th Jan 1950. January 26 was selected as the date of inauguration of Constitution because the Congress has observed its Independence Day in 1930. The Constitution Day is celebrated on 26 November. The Indian Constitution was adopted by Constituent Assembly. The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the Constituent Assembly, and it was established by Cabinet Mission Plan. Cabinet Mission in the year 1946. The Constitution of India was adopted and enacted on 26 November 1949. Now, B.R. Ambedkar was elected to Constituent Assembly so he hailed from Bombay Presidency. Year of birth and death of Dr. Ambedkar, 1891 was the year of birth and 1956 was the year of death. Consider the following statements. The discussion in the third roundtable conference eventually led to the passing of the Government of India Act. Bilkul correct. The Government of India Act 1935 provided for the establishment of All India Federation to be based on a union of provinces of the British India and the princely states. Bilkul correct. Both 1 and 2 are correct. Now next is the Constitution of India provides for all the necessities of the country. Bilkul correct. It is also known as adopted Constitution. So 2 is also correct, but R is not the reason for A. So B is the correct answer. Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by Maulana Azad, and Rajendra Prasad and Jawaharlal Nehru supported for its adoption. Who amongst the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? So it was Gandhi ji who said this, that National Congress should be disbanded. Which one of the following said a constitution like a machine is lifeless thing? It acquires life because of the men who control it, and India needs today nothing more than a set of honest men who will have the interest of the country before them. So it was Rajendra Prasad. In their nationalist reaction, the founding fathers of the Indian Constitution tended to minimize the importance of minorities' interests and emotions. The view is credited to Ivar Jennings said this.
Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? Austin said this. Granville Austin. How many women members were there in the Indian Constituent Assembly? It is an important question. 15 members were there. Now, important committee of the Constituent Assemblies, ये भी कर लेते हैं साथ में. Union Constitution Commission, Jawaharlal Nehru. Rules of Procedure, Dr. Rajendra Prasad. Steering Committee, Drafting Committee. Steering Committee and Rules of Procedure, Dr. Rajendra Prasad. Drafting Committee, as I said, Dr. Bhimrao Ambedkar. Advisory Committee for Fundamental Rights, Minorities and Tribes, Excluded Region, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल. फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, JB कृपलानी. माइनॉरिटी सब कमिटी, यूनियन पावर माइनॉरिटी सब कमिटी, HC मुखर्जी was also member of drafting committee. And Union Power Committee, Jawaharlal Nehru. Provincial Constitution Committee, Sardar Vallabh Bhai Patel. Now let's solve the questions. Who among the following was the chairman of Union Constitution Committee? Correct answer is Jawaharlal Nehru. Who was the chairman of Provincial Constitution Committee? सरदार पटेल. सो मेनली इनका काम था अराउंड 449 के अराउंड. नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ Union Constitution Committee was headed by Jawaharlal Nehru. Committee on Rules and Procedure was headed by Rajendra Prasad. Steering Committee was headed by Rajendra Prasad. Drafting Committee by B.R. Ambedkar. Advisory Committee for Fundamental Rights, Minorities and Tribes, Sardar Patel. Fundamental Rights Subcommittee by J.B. Kripalani and Minorities Subcommittee by H.C. Mukherjee. He was also a member of Drafting Committee. Now, Union Powers Committee by Jawaharlal Nehru and Provincial Constitution Committee by Sardar Vallabh Bhai Patel. Now, let's proceed to the questions. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? So, Jawaharlal Nehru is the correct answer. Who was the chairman of the Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? Sardar Patel. Chairman of the Drafting Committee was B.R. Ambedkar. Who was the chairman of Drafting Committee? B.R. Ambedkar. A Fundamental Rights Committee was headed by Steering Committee, Union Committee, Drafting Committee. So, Drafting Committee was headed by B.R. Ambedkar. Fundamental Right Committee by Sardar Patel. Steering Committee by Rajendra Prasad. And Union Power Committee by Jawaharlal Nehru. So, not all of the options are correct. So, यहाँ से आप टेबल एक बार देख लेना. Who was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights and Minorities constituted by the Constituent Assembly? So, Sardar Patel is the right answer. Now, Drafting Committee of the Constituent Assembly under Dr. B.R. Ambedkar had how many other members? So, 6 other members were there. The name of 6 members is also important. The first one is Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. Krishna Swami Iyer, K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, B.L. Mittal and D.P. Khaitan. N. Madhav Rao was included, replacing B.L. Mittal, and T. Krishnamachari was included after the death of D.P. Khaitan. Who among the following were the members of Drafting Committee? Gopalaswamy, it is correct. Jawaharlal Nehru is not correct. Ayyedi Krishna Swami Iyer is correct. 4 is not correct. So, 1 and 3 is the correct option. Now, who amongst the following was not a member of the Drafting Committee of the Constitution? Jawaharlal Nehru was not a member, else all of them were the members. The Constituent Assembly set up a Drafting Committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar on. So, it was conducted on 29th August 1947. Who was the chairman of National Flag Committee? It is a unique and important question. आ सकता है. So, Dr. Rajendra Prasad was the chairman of Flag Committee. With this, our chapter has ended. Part 3 में we will do the sources of the Constitution. Till then, you can revise Part 1 and Part 2. Thank you. Hello friends, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the third part or third lecture of the Polity Ghatnachakra 2023 edition. In first 2 parts, we have already covered different acts
and Constituent Assembly. In this part, we are going to cover sources of the Constitution and parts of the Constitution. Now, sources of the Constitution basically meant कि Constitution हमारा कौन से sources से बना है. Now, Indian Constitution is one of the lengthiest written constitution, widest possible constitution of the world. Reason being कि जो हमारा constitution है उसने हर countries के जैसे USA, UK, कनाडा, जापान एट्सेट्रा बहुत सी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में से अलग अलग चीज़ों को उठाया है एंड देन उसको सेग्रीगेट करके अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे BR अम्बेडकर साहब ने कंट्री को डेडिकेट किया है. नाउ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये हमें पढ़ना है कि कौन से कंट्री से कौन से फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए गए हैं. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, 1 या 2 क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना. पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो ब्रीफली यहाँ पे दी है एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर. नाउ एक और चीज़ स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूँ कि बेसिक ब्लूप्रिंट या जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल एक कार है, कार का एक स्ट्रक्चर है कि कार इज़ ऑफ स्क्वायर शेप और कार इज़ ऑफ रेक्टेंगल शेप, तो ये एक ब्लूप्रिंट है कार का. तो दिस ब्लूप्रिंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, इस एक्ट का ब्लूप्रिंट है कहा जाता है, इस एक्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. एंड रेस्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं जो हम अभी पढ़ेंगे. मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. अभी मैंने बताया आपको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ some of the feature which has been taken from the Britain or UK वो हैं rule of law, parliamentary form of government, cabinet system, single citizenship, bicameralism, law making procedures, parliamentary privileges, prerogative rights, etc. सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि कंट्री में सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी हमारी कंट्री की. फॉर एग्जांपल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन इन सारे स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं है. हम अपने आप को सिटीज़न बोलते हैं इंडिया का. ऑन दी अदर हैंड अगर हम USA को फॉर एग्जांपल देखें तो USA में डबल सिटीजनशिप होती है. वो डबल कैसे? एक तो दी सिटीजन्स आर दी सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन अमेरिका के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं छोटे छोटे, उनकी सिटीजनशिप अलग से होती है. नाउ ये कुछ फीचर्स वे आर टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन. नाउ preamble, judicial review, independence of the judiciary, fundamental rights, post of vice president, procedure of impeachment of president and removal of Supreme Court and High Court judges. ये प्रोविज़न हमारे लिए गए हैं USA से. एक बात अब ध्यान में रखना कि USA से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिया गया है एंड सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी के रिगार्डिंग जो भी फीचर्स हैं दैट आर टेकन फ्रॉम USA कॉन्स्टिट्यूशन. वेयर एज USSR या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है. तो आप कंफ्यूज मत करना फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ये दोनों अलग कंट्री से लिए गए. फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम USA एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रशिया. ओके, नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रोविजंस वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरलैंड. जो DPSPs हैं हमारे, DPSPs वेयर टेकन फ्रॉम आयरलैंड एंड आयरलैंड ने स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSPs को लिया था. और DPSP आर मेंशन इन आर्टिकल 36 to 51. ठीक है, वो आगे चैप्टर्स में हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में उसको कंप्लीट करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से जो फीचर्स ली गए, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर की स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्गर पोजीशन होगी. अब स्ट्रॉन्गर कैसे? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं कंट्री में जब इमरजेंसी लग सकती है. ठीक है, 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी.
इमरजेंसी के केस में क्या होता है, दैट द यूनियन बिकम्स ऑल पावरफुल, यूनियन के पास पावर आ जाती है, स्टेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे कम अंडर कंट्रोल ऑफ द यूनियन और सेंटर। तो यहाँ पे यही मतलब है कि फेडरेशन तो है, फेडरेशन तो है हमारे यूटीज़ का, स्टेट्स का, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मेंशन है आर्टिकल 131 में, बाकी इनको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ रेसिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन सेंटर and appointment of governor by the center are the provision borrowed from the Constitution of Canada. Now joint sitting under article 108 कि जब भी किसी ऑर्डिनरी बिल या किसी भी बिल पे सहमति नहीं बनती है या the both the houses don't agree to some of the provisions of any act, then there is a deadlock. So that deadlock is addressed by the joint sitting of both houses, and joint sitting का जो order है that is given by the president. Now joint sitting का मतलब ये हो गया language of the preamble, and preamble is taken from the USA constitution, ठीक है, लेकिन जो language है preamble की that is taken from Australian constitution. Freedom of trade, commerce, intercourse and idea of concurrent list are borrowed from the constitution of Australia. Now जितनी भी लिस्ट है, all the lists have been mentioned in Schedule 7. एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, अगर आप नया पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली यूनियन कैन मेक लॉज, स्टेट लिस्ट में द स्टेट कैन मेक लॉज, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज। अब इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर किसी ने लॉ बना दिया, स्टेट ने भी अपना लॉ बना दिया एंड सेंटर ने भी अपना लॉ बना दिया, तो सेंटर के लॉ को प्रिविलेंस दी जाएगी ओवर स्टेट, अगर सेम मैटर पे लॉ बना है तो। बाकी हम इनके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे, अभी आगे चलते हैं। नो प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड टू इमरजेंसी एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो मैंने बताया आर्टिकल 360 में, दैट हैज़ बिन इम्पोर्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। Procedure established by law taken from Japan. Procedure of constitutional amendment and election of member of Rajya Sabha are borrowed from South Africa. Fundamental duties, as I've told you, and the idea of justice, social, economic and political justice has been imported from USSR. Preamble में 3 तरह के justice की बात की गई है, that is social, economic and political. That has also been brought from the Russian constitution. And the ideas of liberty, equality, fraternity मतलब भाईचारा, that has been taken from the constitution of France. And I hope जितना मैंने अभी आपको बताया है, थोड़ा सा आपने 50% तो एटलीस्ट रिटेन किया होगा। इस 50% से you will be able to solve more than 80% of the questions, आप देख लेना। The idea of preamble has been borrowed in Indian constitution from the constitution of USA. Indian political system, which one is supreme? तो the constitution is supreme, ठीक है, the constitution is made by the people of India, ठीक है। constitution का source क्या है पावर का, power source क्या है, from where does the constitution derives its power? That is from the people of India. Okay, now next is judicial review का concept. I already told you, judiciary या supreme court या judicial system से related any of the reforms and any of the concept that has been taken from USA. Now next is system of judicial review existed. Obviously USA में exist करता था, हमारे इंडिया ने USA से लिया, तो इंडिया and USA both have a system of judicial review. Which of the following characteristics is a common between federal system of India and America? That a federal supreme court for the interpretation of constitution. Single citizenship सिर्फ हमारे इंडिया में है, whereas America has dual citizenship. लिस्ट का कंसेप्ट नहीं है, एंड ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम तो है ही नहीं। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो दैट इज फ्रॉम द कनाडा। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री? इट इज बेस्ड ऑन कनाडा। A concept of a union of state in the Indian constitution has been derived from
Parliamentary form of government and all these are derived from the British law. Concurrent list included in Indian constitution is given by Australia. The idea of concurrent list in the Indian constitution borrowed from same question, Australia. Framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list, that is Australia. Repeated questions हैं ये. Concurrent list again Australia. Concept of DPSP was taken from Ireland. Indian Constitution features of directive principle of state policy, this is Ireland. Now in giving representation to talent, experience and service in composition of the Council of State, the constitution makers of India were influenced by they were influenced by the Irish Republic. Now fundamental rights, I already told you, taken from US. Parliamentary system from UK. Emergency provisions from Germany. DPS is from Ireland. So C will be the correct answer. एक बार डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, या तो आपको ऐसे हो गया होगा. यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. फंडामेंटल राइट्स USA, दिस इज राइट. DPSP Ireland, this is also right. Residuary power of the center Australia, this is wrong. Emergency power Germany, this is correct. Now next is fundamental rights. We know USA, US Bills of Right. DPSP Irish Constitution. Union and state relations. Cabinet government हमारा, that is it is taken from the British Constitution, and Union and state relations has been taken from Indian Constitution, Canadian Constitution. Now rule of law, it has been taken from England. Procedure established by law, Japan. Reserving bill, concurrent list from Australia. And reserving bill for the consideration of president, that has been taken from Canada. Now again यहीं से देखते हैं इसको. DPSP Ireland, fundamental right USA, concurrent list Australia. India is the union of state with greater power to union, that is Canada. Fundamental duties, I've already told you, Russia. Constitution of India, this is a question based on assertion and reason. इसमें हमें बताना होता है कि the assertion that has been given is followed by a reason or not. Meaning reason जो भी दिया है यहाँ पे वो हमारे assertion को support कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो let's read this question. Constitution of India has become the longest one. बिल्कुल सही बात है. The chapter on the fundamental right has been borrowed from the model of American Constitution. Reason भी बिल्कुल सही है. लेकिन क्या USA से फंडामेंटल राइट्स को बॉरो करना इज़ अ रीज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग लार्ज? कोई सेंस नहीं बन रही है इस बात की. तो A and R are true, but R is not the correct explanation of R. Now concept of fundamental rights, तो USA से लिया है. Idea of fundamental right, that is USA. Idea of fundamental rights USA. The tradition of writing constitution begin from which country? तो America was the first country to have written constitution. Britain में written constitution नहीं है. It has both written and unwritten parts. तो इसको ध्यान रखना. Now इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी करते हैं. पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं एक बार. Now Indian constitution is divided into 22 parts. ठीक है. Part 4A, that is fundamental duties, and Part 14A, that is Part 14A हमारा क्या है? That is tribunals. Tribunals are mentioned under Article 323A and 323B. 323A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ ट्राइब्यूनल. 323B के अंदर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक ट्राइब्यूनल. 323A के अंदर जो भी ट्राइब्यूनल्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. अगर पॉसिबल हो आपको तो आप एक कॉपी पेन से नोट इसको बना लेना, ताकि जब भी आप दोबारा रिवाइज़ करो तो इसी के साथ लिंक करके अपन सारा रिवाइज़ कर लें. Part 9A was added by the 74th Amendment Act. Part 9A is municipalities and Part 9 is of panchayats. Panchayats were given the
constitutional status by 73rd Amendment Act, and also municipalities by 74th. Part 9B is of cooperatives. Cooperatives को मिला था constitutional status, that is by 97th Amendment Act. Now 22 parts हैं, देख लेते हैं एक बार. Part 1 Union and its territory, Part 2 Citizenship, Part 3 Fundamental Right, Part 4 DPSP, Part 4A Fundamental Duties, Part 5 Union Government, State Government, Union Territories, Part 9 Panchayats, 9A Municipalities, 9B Cooperatives. Part 10 Schedule and Tribal Areas. कौन डिक्लेयर करता है? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है. ठीक है. 11 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स. 13 में ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द कंट्री. 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट. 14A ऑलरेडी टोल्ड यू ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A and B. 15 इलेक्शंस. इलेक्शंस का क्या? आर्टिकल 324 देयर इज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 16 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास. 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज. 18 में एमरजेंसी प्रोविजन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 आर्टिकल मेन है फॉर 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी. ठीक है. miscellaneous and then amendment of constitution. The amendment of constitution is mentioned in article 368. And then temporary transitional special provision 22 में short title commencement authoritative text. Now constitution is divided into 22 parts. Chronologically arrange करना है. Union territory comes in part 1, citizenship part 2, DPSP is in part 3, fundamental duties in part 4. So 1-4, 1 is this, 2 is this, 1-3, 1-3. So A is the right answer. Now citizenship is not correctly matched. Citizenship is correctly matched. Fundamental right matched. Fundamental duties is wrong as it is mentioned in part 4A. 3-tier system of panchayat mentioned in part 9. Which of the part and chapter of Indian Constitution deal with legislative relation between union and state? So it is dealt by chapter 1 part 11. Now abolition of title, this comes under article 18. Fundamental rights hai. Organization of village panchayat is article 40, that comes under DPSP. To provide the opportunity for education to child and board between 6 to 14 years, India, that is Bharat and Union, that this comes under Union territories and this is a fundamental duty. So accordingly our answer will be B. अगर आपको ऊपर समझ नहीं आया तो आप ये एक्सप्लेनेशन चेक कर लो एक बार, यू विल अंडरस्टैंड. करेक्टली मैच हमें पूछा है. पार्ट 2 फंडामेंटल राइट रॉन्ग, दिस इज ऑफ सिटीजनशिप. पार्ट 3 is fundamental rights. Part 4A fundamental duties is correct. Part 4 is DPSP. ठीक है. Part 5 DPSP नहीं है, Part 4 is DPSP. Now not correctly मैच पूछा हमसे. Citizenship Part 2 is right. Union Territory Part 7 never, it is Part 1. ठीक है. Municipalities is correct. Part 9. Elections Part 15 is correct. Now part 9 हमसे पूछा है. Part 9 is of पंचायत. Part A, Part 4A is of fundamental duties. Part 9A is of municipalities and Part 8 is of UT. ठीक है. A is correct answer. देख लेना आप. नॉट करेक्टली मैच पूछा है. पंचायत इज करेक्ट, म्यूनसिपैलिटीज इज करेक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेक्ट, ट्राइब्यूनल पार्ट 10 इज रॉन्ग. पार्ट 10 डील्स विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज. पंचायती राज सिस्टम इज इन विच पार्ट? दैट इज इन पार्ट 9. पंचायती राज इन पार्ट 9. फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3. फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A. Union is mentioned in part 5 and emergency provision in part 18. So accordingly this is the answer. So with this all the questions are finished. In the next part we will do the next chapters. Thank you.
Hello friends, today we are going to start the part 4 of Polity Ghatnachakra 2023. In this part we are going to cover two chapters, that is articles plus schedules of the constitution. So let's move to the question straight away. Now, Indian constitution consists of more than 400 articles. Originally, when the constitution was formed, there were 22 parts, 395 articles and 8 schedules in the constitution, and right now schedules have been changed to 12 and there are around 25 parts in the constitution. Now, how many articles were originally there in the constitution? 395. The total number of articles and schedule in the constitution. Now, how many parts, article and schedule was there in the original constitution? There were 22 parts, 395 articles and 8 schedules. The Indian constitution comprises of 395 articles, 22 parts and 12 schedules. Now, formation of new state, citizenship, fundamental right and setting up of administrative tribunal. We have to match these articles, match this list with the articles. Now, formation of new state is mentioned in article 3, citizenship is mentioned in part 2, fundamental rights is mentioned in part 3 and administrative tribunals are set up in part article 323A. It was added by 42nd Amendment Act. So the correct answer is A here. Now next is the provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered by which article? So it is under 117. 117 के अंदर finance bill is or financial bill is defined and 110 article में money bill is defined. Okay, so let's move to the next question. Provision regarding financial bill is under article 117. Which of the following article provides for the all India services? So article 312 provides for the all India services. The all India services are under the central government. Which of the following pairs, institution and articles is properly matched? Supreme Court of India, this is wrong, it is mentioned in article 124. Election Commission, this is rightly mentioned, it is mentioned in article 324. UPSC is mentioned in 315 and Attorney General is mentioned in article 76. So ध्यान रखना. Now next is which of the following is not correctly matched? 39A, equal justice and free legal aid, this is matched correctly. Article 40 is also correct. 44 is also correct. Article 48 is not correct. Separation of judiciary from executive is mentioned in article 50, whereas article 48 mention about animal husbandry. Okay, now next question. Article 124 I already told you, mentions about Supreme Court. Article 5, article 352 mentions about emergency provisions. Article 5 about citizenship and 245 about distribution of legislative power. So correct answer is A. Now article 14 is a fundamental right, that is right to equality. Article 36 is a directive principle. Article 74 is Council of Minister, whereas article 368 is amendment of the constitution. So the correct answer here is D. Now next question is to admit new law by state. Article 2 is correct. Right to equality. Article 14. Protection against arrest and detention is mentioned in article 22 and the power of the president to assent the bill is mentioned in article 111. So the correct answer here is B. Now article 54, 75, 155 and 164. Let's see it. Now article 54 mentions about the election of president. Article 75 mentions about the appointment of prime minister and cabinet. Article 155 mentions about the appointment of governor of the state, and article 164 provides for the appointment of chief minister and council of minister of state. So the correct answer here is A.
Now next is Article 61. 61 provides for the impeachment of President. 67 provides for the removal of Vice President. Article 94 provides for the removal of Speaker, and 90 provides for the removal of Deputy Chairman of Rajya Sabha. So correct answer here is C. Now Article 323 is about the administrative tribunals. 324 is about election commission. Article 330 is about the reservation of seats for SC and ST in Lok Sabha, whereas 320 stands for function of Public Service Commission. Correct answer is C. Now constitutional amendment is mentioned in Article 368. Finance Commission is mentioned in Article 280. Financial emergency is mentioned in Article 360, whereas All India Services is mentioned in Article 312. So the correct answer here is B. Now CAG is related to Article 148, whereas duties and power of CAGs are defined in Article 149. Finance Commission is mentioned in Article 280. Administrative Tribunal, I already told you, it's Article 323A, and UPSC is mentioned in Article 315. So correct answer here is A. Now, which of the following is not correctly matched? Interstate Council, it is right. Finance Commission is also right. Administrative Tribunal is right. UPSC is also right. So that is why the question is disputed. Article 17, this is wrong. It provides for prohibition of untouchability. Article 78 provides for establishment of Parliament. 192 is correct. 78 provides 70 is related to the Prime Minister, whereas 192 is related to disqualification of member of the state legislature. Correct पूछा है हमसे. Article 352 here is correct, proclamation of emergency, and 352 के अंदर national emergency can be declared. So this one is the correct answer. Now here Article 250 provides for High Court to be a court of record. 222 provides for transfer of judges from one High Court to another. 226 provides for power to issue writs, and 227 provides for power of superintendence over all High Court by the High Court. So the correct answer here is A. Now, under which article of the Indian Constitution there is a provision for High Court for Union Territory? So Article 241 के अंदर provision है. Now Article 148 provides for CAG. Article 131 provides for jurisdiction, means original jurisdiction of Supreme Court is mentioned. Article 76 provides for Attorney General, whereas Article 75 defines appointment of Union Minister. So B is the correct answer here. Now, equality before law is mentioned in Article 14. Right to work is mentioned in Article 41. Just and human condition is mentioned in 42, whereas free and compulsory education is mentioned in 45. Now, which of the following is not correctly matched? So C is not correctly matched. 71A provides for Nagaland, 71B for Assam, 71D for Andhra, whereas 371C provides for Manipur, not Meghalaya. Now, schedules का chapter देखते हैं. The Constitution provides for 8 schedules originally, but now there are 12 schedules. Okay. So total number of schedules in Constitution, there are 12. Indian Constitution has 12 schedules. The Indian Constitution has 20 parts. There are 390 articles. 9, 10th, 11th, 12th were added by the Constitutional Amendment Act. This is right. This is wrong. Constitution has 25 parts and there are 390 articles. No, there are over 400 articles. So only 3 is correct. Now, which of the following schedules of the Indian Constitution lists the name of state and specifies the territory? First schedule provides for that. Second schedule provides for salaries of officer holding public office. Third schedule provides for oath and affirmation. बट याद रखना, ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट की इज मैंशनड इन डिफरेंट आर्टिकल. प्रेसिडेंट की ओथ थर्ड शेड्यूल में नहीं आती. एंड फोर्थ शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द सीट्स in Council of States.
that is Rajya Sabha. If a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the constitution must be amended? So first constitution must be amended as it provides for state and union territories. Now fourth schedule provides for, अभी बताया मैंने, allocation of seats of council of state. Which of the following are enshrined in the third schedule? Oath and affirmation for a minister for the union, बिल्कुल correct है. Oath and affirmation of the chief justice of Supreme Court, this is correct. Form of oath and office for president, this is wrong. President अभी मैंने बताया, it's not mentioned in third schedule. And forms of oath and affirmation made by member of parliament, 4 is also correct. So C is the correct answer. ठीक है, this is here mention किया हुआ है. President की oath is given in article 360 of the constitution and not in third schedule. Now third schedule हमसे पूछा है, provides for oath and affirmation. Fourth schedule, allocation of seats in council of state. Seventh schedule provides for the different list. 3 टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर में यूनियन कैन मेक लॉज और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज. स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है, द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, वेयर एज कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉ. बट दोनों ने अगर एक ही चीज़ पे लॉ बनाया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है ओवर द स्टेट्स लॉ. फोर्थ शेड्यूल काउंसिल ऑफ स्टेट. सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरियाज. एट शेड्यूल लैंग्वेज एंड नाइन शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स. द नाइन शेड्यूल आई वॉज एडेड बाई द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड इस किसके टेन्योर में हुआ था ऐड? तो जवाहरलाल नेहरू के टेन्योर में. ओके, ध्यान रखना. Now seventh schedule provides for distribution of legislative power. Eighth schedule provides for languages. Ninth schedule provides for validation of certain act. 10th schedule provides for disqualification on ground of defection. 10th schedule was added by 52nd Amendment Act. ठीक है, so correct answer here is C. 7th schedule again provides for union state concurrent list. 8th schedule provides for languages. 9th schedule provides for validation of certain act and 10th schedule provides for disqualification. D is the correct answer. So 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, अभी बताया मैंने, जवाहरलाल नेहरू. To give constitutional protection, state land reforms and which of the law have been included, तो 9th schedule में ऐड किए गए हैं. The parliament can place a particular law in the 9th schedule of a constitution, बिल्कुल correct है. The validity of law in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made out. This is wrong. Any law which comes under the 9th schedule can be challenged in Supreme Court plus High Court, and both can declare the acts that are included in 9th schedule as null and void or unconstitutional. Next is Coelho case is related to which schedule? It is related to 9th schedule. Provision of the 3 legislative lists found in schedule 7. Union list में there are 97 entries, state list में there are 66 entries and concurrent list में 47 entries. B is the correct answer. Economic planning comes under 7th schedule and is a matter of concurrent list. It means both central government plus state government can make laws. Now 19th, economic planning is under concurrent list. Prevention of cruelty to animals is listed in which schedule? So it is listed in concurrent list. Which of the following is the subject of concurrent list? So criminal matters, whereas police, radio and television, foreign affairs, these all are the, while police is the matter of state list, radio and television and foreign affairs are the matters of union list. Now which of the following entry is subject of concurrent list? The population control and family planning is a subject of concurrent list. Now public health and sanitation, which we have to tell which of the following is not correctly matched. Public health and sanitation is a matter of state list, census is a matter of union list, and allocation of seats in the council of minister is mentioned in 2nd schedule. This is wrong. It is mentioned in 4th schedule.
whereas anti-defection is mentioned in 10th schedule. Which of the following subject lies in the concurrent list? Agriculture is a matter of state list. Education is a matter of concurrent list. Police is a matter of state list, whereas defense is a matter of union list. So B is the correct answer. Now, education was initially a state subject, was transferred to concurrent list by, it was transferred to 42nd Amendment. Beside the education, weights and measures, wildlife, forest, administration of justice, these were some of the things that were transferred from the state subject to concurrent list. By which amendment of the constitution were the forests were transferred from the state list to concurrent list? अभी बताया मैंने, they were transferred by the 42nd Amendment Act. Now forest is a matter of concurrent list, this is true. We have to say which is not correct. Stock exchange, concurrent list, which is wrong, it is a matter of union list. Now we have to match in here. Union list, census is a matter of union list, state list, police and public order, concurrent list, population control and family planning. Whereas residuary subjects is a, for example, state research. Whereas residuary subjects on residuary subjects, central government or union can make laws. Now, which of the following provision of the constitution have a bearing on education? So DPSPs and rural and urban local bodies, that is panchayats and municipalities. 5th schedule, 6th schedule, both are related to tribal areas. And 7th schedule में which one is there? 7th schedule में contains list of union, state and concurrent subjects. So all have the binding. Now 10th schedule relates to anti-defection law. 10th schedule relates to anti-defection law. It was added by 52nd Amendment Act. Which of the following is not included in the union list? Banking is included, insurance is included and census is included. Gas is not included in the union list. Gas is a matter of state list. Now which of the following is not included in the union list? Defense, foreign affairs and railways. Agriculture is a matter of state list. Which of the following is included in the state list under 7th schedule? Railway police is under state list. Which of the following is in the state list? Railway police. Which of the Panchayati Raj is a subject included in Panchayati Raj in a state list? Which of the following subject in list 3 concurrent list? So concurrent police is a matter of state list, prisons is a matter of state list, public order is a matter of state list, where a criminal procedure is a matter of concurrent list. Marriage, divorce and adoptions, these are mentioned in the concurrent list. Which list and entry of the 7th schedule is related to election of legislature of the state? Both A and C, list 1, list 2, list 1 may entry 72 and list 2 may entry 27, both are related. Now the right of government to impose taxes and fee is provided in which schedule? 7th schedule, it is provided in union list. Now land reforms comes under state list. Anti-defection, it comes under 10th schedule. Anti-defection law is under 10th schedule. Under which schedule of the constitution can the transfer of land of a tribal land to private party for mining be declared null and void? So this is on the 5th schedule. Now if a particular area is brought under 5th schedule of the constitution, which one of the following statement best reflect the consequence of it? This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal people. Yes, this is correct. Which schedule of the Indian Constitution contains special provision for the administration and control of scheduled areas in several states? So it is mentioned in 5th schedule. ठीक है, 5th schedule में all of the scheduled areas and scheduled tribe. 6th schedule में there is special provisions regarding to the states AM, TM. AM मतलब Assam, Meghalaya, T for Tripura and M for Mizoram. The provision of 5th and 6th schedule on the constitution are made to protect the interest of scheduled tribes,
प्रोविजन ऑफ शेड्यूल ऑफ 6 स्टेट डज नॉट अप्लाई टू, अभी मैंने बताया इट अप्लाइज टू AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर इज रॉन्ग. 6th schedule deals with the administration of tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram. Meghalaya, Tripura, Mizoram. B is the right answer. Provision of 6th schedule are applicable to which of the following state? So it is Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So A is the right one. Autonomous district के regarding, each autonomous district has 30 members. बिल्कुल सही. 24 members of autonomous are elected by voting and rest 6 are nominated by governor. This is wrong. And right to direct the act passed by the Parliament of India and Autonomous District of Assam lies with the governor. 3 is also right. So 1 and 3 is correct answer. 2 is not right because not 6 but 4 members are nominated by governor. Okay, ध्यान रखना इसको. 11th schedule is related to पंचायती राज. 11th schedule में how many items are there? So there are 29 items. With this हमने articles and schedule complete किया है. In the next lecture we will start from the preamble. Thank you. Hello friends, today we are going to start the new chapter, preamble. First of all we will see some information that is given in the Ghatnachakra and then we will solve the MCQs. Now the objective resolution was moved in the Constituent Assembly on 30th December by Jawaharlal Nehru and it was adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947. Preamble was amended one time by 42nd Amendment Act 1976 and 3 new words were added that were socialist, secular and integrity. Another important information is Preamble declares India as the sovereign socialist secular democratic republic SSDR. Now justice of 3 types is governed: social justice, economic justice and political justice. Now Supreme Court in the Peshwanandan Bharti case accepted it as a part of constitution. Before this, in the Berubari case, preamble was not considered as a part of constitution. In Golaknath case, preamble was considered as the core soul of the constitution. Now Bommai versus Union of India gave that Supreme Court said that the preamble is a part of constitution and it is non-justiciable in nature. Non-justiciable in nature मतलब for example preamble में 3 टाइप की justice mention है, मैंने अभी बताया. तो अगर the government fails to ensure economic, social or political justice, a citizen cannot go to the Supreme Court and claim that देखो जी हमारी social, economic and political justice follow नहीं की गई है. On the other hand, fundamental rights अगर हम देखें, अगर हमारे साथ untouchability होती है which is prohibited or abolished under Article 17 of the Constitution, अगर अनटचेबिलिटी हमारे साथ परफॉर्म की जाती है देन वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड से दैट देखिए हमारे साथ हमारे फंडामेंटल राइट का वहाँ पे अबॉलिशन या हमारे फंडामेंटल राइट को वहाँ पे एक्सेस नहीं मिल रहा है हमें. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बीइंग जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल. नाउ इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ फेथ, बिलीफ, वर्शिप, एक्सप्रेशन एंड थॉट. इट ऑल्सो इंश्योर्स द डिग्निटी एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल. It is called as the soul of constitution. B.R. Ambedkar called the preamble as the right to constitutional remedies, Article 32 as the heart and soul of the constitution. Now this is a question, this is the text of the preamble. In our constitution this acts do hereby adopt, enact and give ourselves the constitution. X stands for, so it was the date when it was adopted, that is 26 November 1949. Now constitution was adopted on 26 November 1949. What was the exact constitutional status of Indian Republic on 26/1/1950? So it was a sovereign democratic republic. 3 words socialist, secular and integrity were added by the 1976 में 42nd Amendment. What was the exact constitutional status of India? That is, it was a sovereign democratic republic.
Now the mind of the makers of the Constitution of India is reflected in which of the following? So it is reflected in the preamble, which is based on the objective resolution presented by J.L. Nehru. How many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been mentioned in the preamble of India? So justice of 3 types, A is the correct. Liberty of 5 types, equality of 2 types and 1 type of fraternity is mentioned. Now we have to quote the text of the preamble, that is sovereign socialist secular democratic republic. इसको ऐसे याद रखना, SSDR. In which form is India declared in the preamble of Indian Constitution? So it is declared as a socialist, sovereign socialist secular democratic republic, that is SSDR. करेक्ट ऑर्डर अभी मैंने बताया, SSDR. सोवरेन से शुरू होता है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक, एंड अगर रिपब्लिक होता तो वो लास्ट में आता. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ सोशलिस्ट वाज इंक्लूड, अभी मैंने बताया 3 टर्म थे, SSI, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट. So it was added by the 42nd amendment. Which of the following was inserted in the preamble of the Constitution of India through 42nd Amendment Act? तो socialist and secular. अगर integrity होता तो वो भी include किया जाता है इसमें. Secular and socialist were added to the preamble by which? तो 42nd Amendment. Which of the following describes India as a secular state? Preamble to the Constitution of India. Which one of the following words were not included in the preamble of India in 1975? अभी मैंने बताया 2 वर्ड थे, SSI, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. तो इंटीग्रिटी was not included. B is the right answer. Now which of the following words have been added to the preamble by 42nd amendment? सोवरेन तो 1950 में ही था. सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, अगर इंटीग्रिटी होता तो दैट वुड हैव बीन इंक्लूडेड टू. तो बी इज़ द राइट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट. तो हमें गिवन कोड से वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल. बिल्कुल करेक्ट है. It is non-justiciable. It is right. It can't be amended. This is wrong. It has been amended one time by 42nd amendment. The preamble cannot override the specific provision of the constitution. बिल्कुल correct है. So 1, 3 and 4 are correct. 1, 2 and 4 are correct. So B is the correct answer. Now question number 16. The legal nature of preamble is that it is not enforceable. The preamble of the Constitution was amended by the 42nd Amendment. The term socialist was added in the preamble by 42nd Amendment. Socialist was brought in the preamble of the Indian Constitution by which amendment? By 42nd Amendment. In the preamble of the Constitution adopted on 26 November 1949, which word या words were not present? तो अभी मैंने बताया socialist, secular and integrity were not present. 1, 3, 2. 1, 3, 2. 1, 2, 3 is the correct answer. Now next question. The secular was inserted in preamble by 42nd Amendment. The goal of the Constitution is to assure all its citizens justice, social and economic. बिल्कुल correct है. Liberty of thought, expression, belief, faith, worship, 5 तरह की liberty की बात की गई है. This is also correct. Quality of opportunity is also correct and dignity is also correct. So all of the above are correct answer. Now in this question assertion है, reason है. We will have to state that कि जो भी reason यहाँ पे दिया है that is followed by the assertion or not. मतलब assertion का ये reason है कि नहीं. Now India is a sovereign socialist secular democratic republic.
The second reason is it was substituted by 42nd Amendment Act. So statement A is also correct, statement B is also correct, but R is not a reason for A. So A is correct. India has people sovereignty because preamble of the constitution begins with the word we the people of India. India का भी constitution and the constitution of USA both begin with these words only, we the people. Now where have the words we the people have been used in the constitution of India? So it is used in the preamble. All individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism. Which among the following is the correct explanation of the term secular? That in India has many religion. This is wrong. In India have religious freedom. Following the religion depends upon the will of individual. Wrong. And there is no religion of the state in India. This is correct. D is the correct answer. Secular का मतलब है कि the state does not have any religion of its own. Now the next is which of the following word is not mentioned in the preamble of the constitution? So federal word is not mentioned. Which of the following word is not in the preamble to the constitution? So public welfare is not there. Which of the following liberty is not embodied in the preamble of constitution? So liberty of thought is mentioned, expression is mentioned, belief is mentioned, but economic liberty has no mention. D is the correct answer. Which of the following is not mentioned in the preamble of constitution? Social, economic and political justice is mentioned. Religious justice का कोई concept नहीं है. Which of the following is true in relation to the preamble of the Constitution of India? Socialist and secular were not the part of preamble on the enforcement. बिल्कुल करेक्ट है. ए ही इसका सही आंसर होगा. ठीक है. बी रॉन्ग है. 1977 के अमेंडमेंट से नहीं, 1976 के अमेंडमेंट से ऐड हुए थे. Above mentioned word 1976 मैंने अभी बताया. These two words are not a part of preamble. This is wrong. They are part of preamble. So A is the correct answer. Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of Constitution? The preamble is known as the soul of Constitution and heart and soul of the Constitution किसको बोलते हैं? That is the Article 32. 32 क्या है आर्टिकल हमारा? It is right to constitutional remedies. Now, who among the following call the preamble of India as the horoscope of our sovereign democratic republic? So K.M. Munshi. Who has termed constitution as a sacred document? B.R. Ambedkar. In which case the Supreme Court first declared that the preamble is not part of constitution? बेरुबारी में declare किया था. Then again गोलकनाथ and केशवानंद भारती में Supreme Court asserted that the preamble is a part of constitution. Now next question is, in which of the following cases the Supreme Court held that the preamble forms the part of constitution? बुम्बई केस में भी किया था, बुम्बई में भी, and then केशवानंदन भारती and then गोलकनाथ. इन तीनों केस में Supreme Court held that the preamble is a part of constitution. In which of the following cases Supreme Court regarded preamble as a basic structure? Basic structure की definition was given in the Keshwanandan Bharti case of 1973. So D is the correct answer. The ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the. So these have a bearing on both directive principle of state policy, जिसमें कि there is a directive that the state has to ensure just economic order, equality की बात की गई है, equality, equal distribution of wealth, fundamental rights में भी बात की गई है, equality की, fundamental duties भी it has a bearing. So C is the correct answer. Now objective of Indian Constitution is reflected in, the objective is mentioned in the preamble of the Constitution. How many types of justice has been enshrined? So 3 types of justice have been enshrined, that is social, economic and political. The preamble of Indian Constitution which justice provides for all to its citizen. So social, economic and political. D is the correct answer. Economic justice as the objective of Indian Constitution has been provided in the preamble and DPSP. DPSP कौन सा?
31A, the state shall strive to promote the welfare of people by securing and protecting as effectively may a social order with justice, social, economic and political. तो 38 सबसेक्शन 1 में ऑफ द DPSP इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है. 44 the preamble of the constitution is a part of constitution but has no legal effect independent of other parts. No, the preamble given in the constitution, it is enforceable, this is wrong. Is important and have utility, correct. Describes the aim of governance, it is correct. Helps to give judicial meaning to our constitution, it is also correct. This is also correct. 1 2 3 4 सभी आंसर होना चाहिए, बट इसीलिए दिस क्वेश्चन इज डिस्प्यूटेड. Now which of the following is correct? Social equality is not guaranteed in our constitution, this is wrong. It is guaranteed by the right to equality. Social equality already existed in our country, this is wrong. सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल करेक्ट है. अभी बताया मैंने, आर्टिकल 14 गारंटीज इट, राइट टू इक्वालिटी. इसी के साथ अब हमारा प्रीएम्बल का चैप्टर ख़त्म होता है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू दी गवर्नेंस सिस्टम. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द गवर्नेंस सिस्टम. सो स्ट्रेट अवे लेट्स मूव टू द आंसर्स एंड द क्वेश्चंस. Which of the following best defines the term state? A community of person permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. A is the correct answer here. Which one is the most prominent element of state? So sovereignty. Sovereignty मतलब independence to take decision on its own. A state is that which has full sovereignty. For example, in our Indian constitution and in our Indian system, our parliament is a sovereign parliament. It means it has power to take its own decision. With reference to sovereignty in India, which of the following statement is correct? India is a member of Commonwealth of Nation and sovereignty of India is curtailed due to its member of Commonwealth of Nation. No, it's not. A is the correct answer here. Now the next is Constitution of India provides for which type of governance system? It provides for the parliamentary governance system. So governance systems are of two types. One is the presidential and other one is a parliamentary. Parliamentary system where the executive is responsible to the legislature. In a parliamentary system, legislature controls the executive. ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. या इसका दूसरा ऑप्शन में अगर दूसरे तरह से ऑप्शन इसका बनाया जाए तो इट वुड बी एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. A parliamentary system of government is a one in which all political parties in parliaments are represented. The government is responsible to the parliament. The government is elected by the people and can be removed by them. And the last option is government is chosen by the parliament but cannot be removed before the completion. This is wrong. So the most appropriate definition is the government is responsible to the parliament and can be removed by it. Now question 7. The parliamentary form of government was first introduced in which country? So UK. The Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in India that has a system of judicial review. So British parliamentary system में judicial review का concept नहीं है, Indian कॉन्स्टिट्यूशन में है. एंड दिस जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम हैज़ बीन ब्रॉट फ्रॉम द USA कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अ ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रिटिश मॉडल? एज रिगार्ड्स लेजिस्लेचर, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. बिल्कुल करेक्ट. वॉट लिमिट्स इट? दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Now in India, matter related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. बिल्कुल correct है. So both A and B is correct. Now which of the following is not a feature of Indian constitution? Parliamentary system है, independence of judiciary and federal system are correct. Presidential system is applicable in the case of USA.
Which of the following is incorrect about the Indian political system? That is having a presidential system of government. There is a parliamentary system of government in India because the Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha. The main advantage of parliamentary form of government is that executive remains responsible to the legislature. ये मैंने पहले बताया आपको. In the context of India, which of the following principle is or are implied institutionally in the parliamentary form of government? The members of cabinet are the members of parliament. Minister holds office till they enjoy confidence in the parliament. So both of these are correct. Now there is a third statement also. The cabinet is headed by the head of state. So this is not correct. Head of state is president, but the cabinet is headed by the prime minister. So A is the correct answer here. Which of the following statement is correct regarding parliamentary form of government? That the legislature and executives are independent, legislature is responsible. So there are different features of parliamentary form of government. Let's see here. Executive is responsible to the legislature, majority party rule, collective responsibility, nominal and real executive, political homogeneity, double membership, leadership of prime minister, dissolution of lower house, and secrecy of procedure. Now out of the following statements, choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government. An arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out satisfaction of all. This is wrong. A mechanism for speeding up the activities of government whose responsibilities are increasing day by day. The next option is a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility. This one is the most appropriate definition. Now, in the presidential government, all the executive powers are vested in the president. The cardinal features in the political system of India are democratic republic है, parliamentary form of government है, supreme power vested in the people of India, and it provides for a unified authority. This is wrong. So 1, 2, 3 are correct. So the next question is, consider the following statement. India has a democratic polity, India is a sovereign nation, India is a democratic society, and India is a welfare state. All of these are true. So the correct answer here is D. Now, which one of the following is not a feature of Indian polity? So authoritarian government is not a feature. The center and state government get authority from Indian Constitution. Schedule 7 में 3 types of list are mentioned जहाँ से basically power derive होती है. Now statement दिया है and we have to choose the correct answer. Now assertion is that India is a democratic country and India has a constitution of its own. This is right. The reason is accurate for the assertion given. So B is the correct answer. Which of the following is not a feature of good governance? So red tapeism. Welfare state aims to management of welfare of weaker section. The state is everywhere, it hardly leaves a gap. This statement explains the concept of a welfare state. Which of the following is not the philosophy of the Constitution of India? Communist state is not a philosophy. Which of the following statement is correct? The Constitution of India is presidential. This is wrong. India is a titular monarchy. India is an aristocracy, and India is a parliamentary government. D is the right answer. Main source of political power is the people. Which of the following is a basic feature of presidential government? So there is single executive, that is the president. The main feature of presidential government is the head of the executive is president. The president appoints his council of ministers, and the president cannot dissolve the legislature. All of these are features. In which country was the presidential form of government first formed? It was formed in the USA. आज भी USA में ही है. The democracy of India is based on the fact that the public enjoys the right to choose and change the government. Now,
The democracy's superior virtues lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. India is a republic. That means India has no hereditary rulers in India, and republic means the president of India is elected, and it is not directly elected but indirectly elected by the people of India. India is a republic, which implies that the head of state is elected. अभी बताया मैंने. Which of the following determines that Indian constitution is federal? Distribution of power between union and state, that is in 7th schedule. Indian constitution is partly rigid and partly flexible. Which one of the following points differentiate the Indian parliamentary system and the British parliamentary system? It is of the judicial review. Indian system में there is an option of judicial review, whereas British system में कोई भी judicial review नहीं होता है. Assertion का क्वेश्चन है, the Constitution of India provides for a federal system. It has created a very strong center. So federal system is there, but the reason is not correct for the assertion. So B is the right answer here. Now, federalism is not practical in India, and India is not a federal state. It is wrong. India is a federal state, and federalism in statement A is true. Which of the following in Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in correct nature? The independence of judiciary safeguarded. The union legislature has elected representatives from constituent units. Union cabinet can have elected representative from regional parties, and fundamental rights are enforceable. This is wrong. Federalism का मतलब होता है, the option is correct, the independence of judiciary is safeguarded, and by which article? Article 50 of the directive principle of state policy. Executive is different from judiciary, separation of judiciary from the executive. Now, which of the following is not a federal feature? Single citizenship is not a federal feature. Which unitary elements are found in the Indian federal system? So, written constitution, wrong. Rigid constitution, wrong. Supremacy of the constitution is wrong. Appointment of governor, yes, it is a unitary feature. Decentralization of power, this is also wrong. It is a federal feature. President approval on state bills, constitutional crisis, yes, this all are. And one Supreme Court, this is not a unitary feature. So D is the right answer here. Unitary element क्या है फेडरल सिस्टम का? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दिस इज रॉन्ग. अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर विच इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट, तो ये सही है. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. जुडिशियल रिव्यू तो नहीं हो सकता. ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं हो सकता. बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया सर्विसेज येस, आई एम सॉरी, दिस इज़ ट्रू, बिकॉज ऑल इंडिया सर्विसेज में यूपीएससी के थ्रू central governments control all the people that are employed through the all India services. So B is the correct answer. Which of the following system or the federal system of in India are incorrect? Are correct? The constitution introduces a federal system as a basic structure. This is correct, and there is a strong admix of a unitary bias. This is also correct. Both union and state legislature are sovereign. The financial and legislative and judiciary power have been divided. This is also wrong. So 1 and 2 are correct. Which of the following characteristics is not true for the unitary form of government? So idea for large country. The president of India is elected indirectly, and parliamentary system of India has been combined with republicanism. This is correct. So A is the correct answer here. Political parties are lifeblood of the democracy. Normally people blame political parties for bad governance. A is the correct answer here. Who has proposed partyless democracy in India? Both Mahatma Gandhi and Jayaprakash Narayan. The primary objective of India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration and accommodation of diversity that has built a stronger, not weaker Indian nationhood. B is the correct answer. The nature of Indian political system embodies the element of continuity and change. The Indian political system contains the element of
following political system such as modern style, traditional style and saint style? A is correct. Women, Dalit, poor and minority groups are the biggest stakeholder of democracy in India. The democracy in India has emerged as a carrier for the desire of self-respect. So, A is the correct answer here too. The reason for Indian constitution for being the bulkiest, so the answer is disputed here. There is no single truth among all the choices, but all are true. Which of the following statement is true? Federal form of government is in United States of America. Yes, this statement is true. Which of the following is not a feature of Indian federalism? It is a result of an agreement among the federating units. Indian federalism is called quasi-federal. India has an independent judiciary with the power of judicial review. B is the correct answer here. Indian constitution is quasi-federal. The Indian constitution is neither federal nor unitary. A is the correct answer. Nature of Indian constitution is federal in nature but unitary in spirit. Who called the Indian federalism a cooperative federalism? Austin. India is a quasi-federal state by K.C. Ware. In relation to Indian constitution, who said that Indian constitution established good balance between rigidity and flexibility? K.C. Ware. Indian constitution has not been set in a tight mold of federalism by B.R. Ambedkar. Principles of administration as myths and proverbs was said by Herbert Simon. Which of the following reflect the most appropriate relationship between law and liberty? That if there are no laws, there is no liberty. Who among the following concerned with the concept of development administration? W. Riggs. Which of the following thinkers favor similarity in public administration and private administration? Henry Fayol. If our civilization fails, it will mainly be because of a breakdown in the administration. The statement was made by B. Donham. Which of the following is not true in relation to democratic determination? That supreme power is vested in person, likewise a king. Which of the following are the main feature of rule of law? So limitation of power, equality before law, people responsibility to government, ये नहीं है, and liberty and civil rights. C is the correct answer. A constitutional government is one that places effective restriction. No, it does not. And places effective restriction on the authority of state. This one is correct. So B is the right answer. Constitutional government is defined as a limited government that is limited by the Constitution of India. Constitutional government means a government limited by the terms of Constitution. Most appropriate definition of liberty is opportunity to develop oneself fully. Implication of equality in society in absence of privilege. The political feature that are common to India and USA. Residuary power vested in center. This is wrong. Residuary power vested in the states. Wrong. President has power of pocket veto. So this is correct. Upper house has some nominated member. This is wrong. 3 is correct. In which the following, which report of the second ARC Commission, barrier of good governance in India, has been identified? So, citizen-centric administration, the heart of governance. Which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity? So, all of these institutes. In which of the following decades the parliamentary system in India shifted from centralism to federalism? 1980s में. So with this we are done with the chapter of governance system. Thank you. Hello friends. So today we are going to do the next chapter, that is states and the UTs. सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी हुई है वो हम देखते हैं, then we will do the MCQs. Now Indian Independence Act of 1947 led to the formation of two independent states, that is India and Pakistan. Princely states were provided with 3 options, that is to join India, to join Pakistan or being independent. 552 princely states were there, out of which 549 joined, and जो last के 3 थे they did not join India. 3 states के नाम थे Hyderabad, Junagadh and Kashmir. Later on, Hyderabad through military action which was named as Operation Polo, Junagadh referendum के through and Kashmir through इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कि राजा हरि सिंह ने साइन किया था.
Kashmir also came under the Indian control or Indian occupancy. Now, the constitution came into force in 1950 and recognized 4 different categories of territories in Schedule A. ठीक है. Part A comprised of the former British Indian provinces having a governor and legislature. Part B comprised of the former princely states governed by the Raj Pramukh, while Part C was combination of princely state as well as chief commissioner provinces. Part D comprised of the lone territory of Andaman and Nicobar, which had LG appointed by the central government. Now let us see the Article 1 of the Constitution state that in India, that is Bharat, shall be a union of state rather than a federation of state, and no state in the Indian territory has right of secession. अलग नहीं हो सकते हैं. Article 2 provides for the admission or establishment of new state, and Article 3 provides for the power of Parliament in formation of new state and alteration of area of boundary names of the existing state. तो Article 2 में a new state के regarding provisions हैं, and Article 3 में जो present states हैं उनके regarding provisions हैं, and both the articles, Article 2 and Article 3 के regarding Parliament के पास हमारे power है. Now, Parliament can form new states through a simple majority. Amendments can be made under Article 2 and 3 are out of the scope of Article 368. Now, state reorganization committees under Fazl Ali constituted for the first time 1953 में. Other two members of Fazl Ali Commission were K.M. Panikkar and Hridaynath Kunzru. S.K. Dhar Committee 1948 में it recommended the reorganization of state on the basis of administrative convenience instead of linguistic basis. JVP Committee also recommended on the basis of administrative purpose. Although 1953 में Andhra Pradesh became the first state of India to be formed on the linguistic basis. Now, by which name in our country mentioned in the constitution, that is Bharat, that is India. Now, question 2 is according to Article 1 of the Constitution, India is a union of state, not federation. India is a union of state. Now, Indian Parliament has power to create a new state on which of the following provisions? तो Article 3 के अंदर में a new state can be formed. ठीक है. Article 2 has the power of admission or establish new states. The power to carve a new state is vested in the Parliament, और ये simple majority से बनाया जा सकता है. Which of the following is empowered to alter the boundary of the state under the Constitution? Parliament is empowered. Article 3 के अंदर. Who among the following has the executive power to admit a state into union or establish new state? Parliament has the power. Power to include or admit any state into Union of India is given to the Parliament. Which of the following is not correct in the matter of formation of new state? Parliament may by law form a new state. This is correct. Such law shall contain provision for the amendment of first schedule and fourth schedule of the Constitution. बिल्कुल first schedule में states and UTs है, and fourth schedule में allocation of seats to राज्य सभा. तो दोनों में provision है. Such a law shall be deemed to be an amendment for the purpose of Article 368. So this is wrong. It is not an amendment of the Constitution. जब भी सेशन है या कंट्री के किसी पार्ट को दूसरी कंट्री में देना है, then it is done through an constitutional amendment Article 368. Creation of a new state requires a simple majority. Now, a bill for the purpose of creating a new state in India must be passed by simple majority. India is not a union. Union Parliament has power to alter the area, boundary and name of any state even without its consent. A is not true. A is false. B is true. D is the right answer. The consent of dash is required for alternating its boundary according to the constitutional provision. The state, no
नो कंसेंट ऑफ स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरियाज बाउंड्री नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट स्टेट कंसेंट। अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट से मनी बिल भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एंड द प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट, ऑल्दो जो भी प्रोविजंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होता है कि ही कैन आस्क द स्टेट्स अबाउट दैट, बट स्टेट के व्यू से प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग एनी स्टेट? इंक्रीज इन इंडिया, इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, अल्टर द नेम, अ स्टेट में इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। दिस इज करेक्ट वन, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। Now, which of the following is not possible by a law of parliament under Article 3? Formation, alteration of boundary, admission of new states. This is correct. Admission of new state is given in Article 2, as I have told you. Now, which of the following is correct? The term union of state has been used in the constitution because Indian state have no right of separation. बिल्कुल करेक्ट है। एस केदार कमीशन हैज़ गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रैदर देन लैंग्वेज फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कांग्रेस कमेटी इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पत्ताभी सीतारमैया वॉज नॉट इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बिल्कुल करेक्ट, डी इज़ द राइट आंसर। Now, with reference to the federal system in India, which of the following statement is correct? State have no right to secede from union under the Constitution of India. This is correct. Just advocacy of secession will have the protection of freedom of expression. This is wrong. Only one is correct. यहाँ पे जैसे दिया है, the state can impose reasonable restriction under Article 19, that is right to freedom. 6 तरह की freedom है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? जस्ट एडवोकेसी ऑफ सिचुएशन विल हैव प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सो दिस इज रॉन्ग। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज वेयर एस्टैब्लिश्ड बाय द 1956? तो 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज? प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। Number of state after the formation of Telangana 28. Number of union territories अभी तो 8 हैं फिलहाल। Which of the following is not a union territory? Goa is not a union territory, it is a state. And अभी दादरा and Nagar Haveli plus Daman and Diu, these both have been combined to form 1 UT. That is why पहले 9 UTs थी and now it has changed to 8. Delhi is a union territory. By which constitutional amendment Delhi was given the status of the national capital region? By 69th amendment. Now, लक्षद्वीप का ईयर ऑफ क्रिएशन था हमारा 1956, दमन एंड दीव का क्रिएशन था 1962, चंडीगढ़ का ईयर ऑफ क्रिएशन था 1966 एंड दादरा एंड नगर हवेली का था 1961। In 26 January 2020, both Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have been integrated. Now, which of the following pair is not correctly matched in terms of the power of President to make regulation for certain union territory under Article 240? तो 241C के अंदर this is given wrong. Now, Article 240 देख लेते हैं, it is important. Article 250 deals with the power of the President to make regulation for certain UTs. The President may make regulation for the good governance of union territory. Andaman and Nicobar 241A, Lakshadweep 241B, Dadra and Nagar Haveli 241C, Daman and Diu D and 241E deals with Puducherry. ठीक है, इट इज़ गिवन पुदुचेरी का 241C दिया है जबकि दादरा एंड नगर हवेली का है, तो दिस इज़ रॉन्ग। Which of the following statement is incorrect? Goa attained full statehood 1987. This is correct. Diu is an island on the Gulf of Cambar. It is correct. Daman and Diu were separated from Goa by the 56th Amendment of the Constitution. It is also correct. Dadra and Nagar Haveli were under French colonial rule in 1954. So it was not under French but the Portuguese influence.
Now, Sikkim became a state of India by 35th Amendment. Again, Sikkim became a full-fledged state by the 36th Amendment. A separate state of Vananchal state can be carved out of Bihar, can be made possible. It can be made possible by none of these. It can be made only by the parliament. State का कोई रोल नहीं होगा उसमें. So D is the correct answer here. Chronological order हमें करना है. हरियाणा was founded in 1966. Bihar was separated from Jharkhand in 2000. Telangana in 2014. Goa subsequently in 1987. So हरियाणा फर्स्ट पे होगा, गोवा हमारा सेकंड पे होगा. 1 2 एक ही ऑप्शन में है. सॉरी, हरियाणा विल बी इन द फर्स्ट, गोवा विल बी इन द सेकंड. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है स्टेट्स का. तो लेट अस सी. सिक्किम बिकेम अ पार्ट बाय 36th अमेंडमेंट. 1975 में सिक्किम बना हमारा. अरुणाचल प्रदेश इन 1987. छत्तीसगढ़ सेपरेटेड फ्रॉम मध्य प्रदेश 2000 में. एंड झारखंड ऑल्सो इन 2000. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बी आंसर है. नागालैंड इन द ईयर 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 एंड अरुणाचल 1987. अरुणाचल के साथ मिज़ोरम भी इसी टाइम पे इट वॉज सेपरेटेड. और छत्तीसगढ़ केम इन टू एग्जिस्टेंस ऑन 1 November 2000. उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 2000. झारखंड केम इन टू एग्जिस्टेंस 2000. हरियाणा अभी बताया 1966 में. 1975 में सिक्किम हमारा. नागालैंड 1963 एंड मेघालय अराउंड 1972 में शायद हुआ था. अकॉर्डिंग टू दिस 3-1 किस ऑप्शन में है? इसमें है. इट वुड बी द करेक्ट वन. आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन 1953. हिमाचल प्रदेश 1971 में. हरियाणा अगेन 1966 में. एंड सिक्किम इन 1975. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नागालैंड, देन मेघालय, देन सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश. नागालैंड हमारा 1963 में. मेघालय हमारा 1972 में. सिक्किम 1975 एंड अरुणाचल प्रदेश 1987. करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन हरियाणा 1966 में. ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है. महाराष्ट्र वॉज फॉर्म्ड इन 1960 एंड राजस्थान इन 1958. सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है. नागालैंड हमारा 1962 नहीं 63 में होगा. झारखंड तो 2000 में था. सिक्किम 1975 में. एंड तेलंगाना 2014. 62 इज़ गलत. ठीक है, यहाँ पे 63 होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन को सही नहीं बताया. 1948 में कौन सा स्टेट इस्टेब्लिश हुआ था? तो कोई भी स्टेट इस्टेब्लिश नहीं हुआ था 1948 को. तो ये ऑप्शन इसीलिए डिस्प्यूटेड है. नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पॉइंट आउट करना है. द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु. ठीक है, नो इट इज़ रॉन्ग. स्टेट ऑफ मैसूर वॉज नेम एज कर्नाटका. तो पहला ही हमारा गलत है यहाँ पे. द कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1953. कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गलत. यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को करेक्ट नहीं माना. आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन विच ईयर द इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन ऑन बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. 1956 में लिंग्विस्टिक बेसिस में डिवीजन हुआ. स्टेट्स वॉज वे रीऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इन 1962. सॉरी 19 नहीं, गलत दिया यहाँ पे. 1956 होगा. विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? आंध्र प्रदेश. First state formed on the basis of languages, it was Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was created in 1953. Now Justice Fazl Ali, K.M. Panikaran, H.N. Kunjru were its member. हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 का. कमीशन सपोर्टेड द स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब. ये तो बिल्कुल गलत है. फर्स्ट वाला सही है. एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 14 स्टेट एंड 6 यूटीज वेयर फॉर्म. तो 1 and 3 आर करेक्ट. In which year were the Indian state reorganized on the recommendation of State Reorganization Commission? तो 1956 में.
द कैपिटल विच स्टेट हैज़ नॉट बी रीनेम्ड आफ्टर अटेनिंग फ्रीडम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तमिलनाडु कैपिटल मद्रास, नेम्ड एज चेन्नई, कलकत्ता को कोलकाता, बॉम्बे को मुंबई, पौंडीचेरी को पुदुचेरी एंड बेंगलोर को बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम। तो डिस्प्यूटेड है इसीलिए ये। Now, after the Nagpur session of 1920, the Provincial Congress Committee were constituted on linguistic basis, correct, and both Congress rejected the demand of formation of province on linguistic basis। बिल्कुल linguistic basis पे किसी ने भी फेवर नहीं किया था। They all wanted to create states on the basis of administrative convenience, but वो ultimately successful नहीं हो पाया। सिटीजनशिप एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ इसके MCQs देखेंगे। Now, in which part of the Constitution of India we find the provision relating to citizenship? तो पार्ट 2 में, पार्ट 1 में we have states and UTs। Now, which part of the Constitution contains provision relating to citizenship? पार्ट 2। कौन से आर्टिकल्स में सिटीजनशिप की बात है? तो फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11। आर्टिकल 2-3 तो अभी हमने पढ़ा पहले चैप्टर में। 2-3 is related to formation of new state and 3 is related to altering the boundaries etc. of the state। Now, citizenship provided by the Constitution of India is single citizenship। इंडिया में स्टेट्स की कोई अलग सिटीजनशिप नहीं होती है, सारे सिटीजन्स के पास इंडियन सिटीजनशिप होती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो वहाँ पे प्रोविज़न है डुअल सिटीजनशिप का। जो यूएसए के स्टेट्स होते हैं उनकी अलग सिटीजनशिप होती है एंड यूएसए एज अ होल की अलग सिटीजनशिप होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया इज़ करेक्ट? तो सिंगल सिटीजनशिप ऑफ होल ऑफ इंडिया। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, बर्थ, नेचुरलाइजेशन, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, डिसेंट। ठीक है, दीज ऑल आर द वेज जहाँ से एक्वायर्ड होती हैं। टर्मिनेट, वॉलेंट्री टर्मिनेशन होता है, या एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री, या टर्मिनेशन भी होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ, अ सिटीजनशिप विल लूज his or her citizenship if he or she renounces the Indian citizenship, voluntarily acquires the citizenship of another country, marries the citizenship of other country, criticizes the government। 4 तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अगर 4 को हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगा, एंड किसी भी अदर कंट्री के सिटीजनशिप को मैरी कर लेने से सिटीजनशिप नहीं जाती है। तो 1 and 2 हमारा करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बिल्कुल करेक्ट है इंडिया के केस में। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। गलत है, क्योंकि नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी हमारा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो 2 तो हमारा गलत हो गया। तो 1 तो करेक्ट है, बाकी थर्ड ऑप्शन देखते हैं। फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये बिल्कुल गलत है। अगर वो कुछ ऐसा काम करता है दैट इज़ डिबार्ड बाय लॉ, या एनिमी कंट्री का बन जाता है, इफ़ अ कंट्री इज़ इन वॉर विथ अनदर कंट्री, तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप उसकी ख़त्म हो जाती है। तो 1 इज़ द करेक्ट आंसर है। नाउ, who among the following is not eligible for registering as an overseas citizen of India card holder under the Citizenship Act? तो Indian who migrated to Pakistan after citizen। Now, Article 371A to 371I were inserted in the Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Goa, Arunachal Pradesh। Correct है। The Constitution of India and the UTs envisage a dual policy but a single citizenship। This is wrong। Naturalized citizen of India can never be deprived of citizen। बिल्कुल गलत है। 1 only is the correct answer। डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट किस कंट्री में है? यूएसए में है। नाउ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? तो पार्लियामेंट के पास पावर है। हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन नीड टू रिसाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट? तो 7 years। Who among the following have the exclusive power of determining the issue of citizenship in India? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है वो।
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का पार्लियामेंट ने कब पास किया था? तो 11 दिसंबर को 2019 को पास किया था. Which of the following the purpose of Indian Citizenship Act to grant citizenship to persecuted minorities group under अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश. मुस्लिम्स इंक्लूड नहीं थे. इसके अलावा जितनी भी कम्युनिटीज़ थी हमारी, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, इन सबको सिटीजनशिप अलाउ की गई थी. विद दिस वी हैव डन आवर 2 chapter, that is duties and state and citizenship. Now in next chapter we will start fundamental rights. Thank you. Hello friends, so today we are going to start our next chapter, that is fundamental rights. Now fundamental rights start करने से पहले कुछ important information है जो कि एक बार देख लेते हैं, उसके बाद then we will proceed to the MCQs. Now the first demand for the fundamental rights came in the form of Constitution of India Bill 1895 that was inspired by B.G. Tilak. Now मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं जिसे हम, 1928 में इट डिमांडेड फॉर इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. ये जो डिमांड थी फंडामेंटल राइट्स की, दैट वाज अडॉप्टेड इन द कराची सेशन विच वाज प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. फ्रीडम के अंदर भी 5 टाइप्स ऑफ राइट हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. जिसमें कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Now right to property पहले was a fundamental right under Article 19 but later it was deleted, amended by 44th Amendment Act and it is now a legal right under Article 300A of the Constitution of Part 12. Now some of the fundamental rights, for example Article 20 and 21 के थ्रू जो rights हमें मिलते हैं, that cannot be abolished even during the national emergency. ठीक है. Now fundamental rights are justiciable in nature. Article 14 provides for right to equality before law and equal protection of law. Right to equality is enshrined in Article 14 to 18. Now prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex is Article 15. Article 16 is related to equality in matters of public employment. Article 17 is right against untouchability or abolition of untouchability, and Article 18 is abolition of titles. Abolition of titles, for example पहले के ज़माने में राजा, महाराजा, इस तरह के टाइटल्स होते थे जो लोगों के पास होते थे, बट आर्टिकल 18 से इन सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया. ऑल्सो इसमें एक बात याद रखना, पद्म अवार्ड्स जो भी होता है, पद्मश्री या पद्म विभूषण, इनको हम टाइटल्स कंसिडर नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 18. नाउ आर्टिकल 19 इज़ राइट टू फ्रीडम. उसी में 19A इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. 19B इज़ राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स. ये जो 19B में राइट टू असेंबल है, इसमें राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है. 19(1)(c) के अंदर आता है राइट टू फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. आर्टिकल 19(1)(d) इज़ राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस. थ्रू आउट इंडिया मतलब विद इन इंडिया. विद इन इंडिया का जो राइट है दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 19(1)(d), वेयर एज राइट टू मूव आउटसाइड इंडिया इज़ गिवन इन आर्टिकल 21. ये ध्यान रखना, ये एग्ज़ाम में बहुत आता है. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. राइट टू मूव विद इन इंडिया इज़ अंडर आर्टिकल 19(1)(d), वेयर एज आउटसाइड इंडिया इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 21. आगे देखते हैं. आर्टिकल 19(1)(e) इज़ राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी एंड इट वॉज एडेड बाई द 44th Amendment Act. 19F इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड. Article 20 provides for protection in respect for conviction of offences, protection of
life and personal liberties described in Article 21. Now 86 Constitutional Amendment Act 2002 एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया 21A के अंदर, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के जो भी हैं बच्चे, इनके लिए राइट टू एजुकेशन वॉज मेड कंपल्सरी. Now Article 22 is provides for protection against arrest and detention. अब 22 के अंदर में हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग लॉ बोथ सेंटर प्लस स्टेट बना सकती है, बट सम ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आर एक्सक्लूसिव, जिसमें कि सेंटर ही लॉ बनाएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिलेटेड. फॉरेन रिलेशंस एंड सिक्योरिटी एटसेट्रा के जो केसेस हैं, इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ सेंटर बना सकता है. नाउ आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर. राइट टू फ्रीडम इज ऑफ रिलीजन इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28. 29 and 30 आर रिलेटेड टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू आर्टिकल 32 is known as the heart and soul of the constitution. Now आर्टिकल 32 के अंदर में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिट्स इशू करता है सुप्रीम कोर्ट, एंड अंडर आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट रिट इशू करता है. एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन रिट्स के रिगार्डिंग याद रखना कि रिट्स का जो राइट है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज़ लोअर, हाई कोर्ट का एम्बिट ज़्यादा है. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अबॉलिशन के रिगार्डिंग रिट इशू कर सकता है, वेयर एज हाई कोर्ट का एम्बिट रिट के लिए ज़्यादा है. फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर ही सकता है, एनी अदर मैटर्स के लिए भी इशू कर सकता है हाई कोर्ट रिट. ठीक है, तो रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज़ वाइडर दैन सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना. नाउ 5 types of writs is mentioned in Article 32 and 2 to 6. Number 1 is habeas corpus, to have the body of. This writ can be issued against both public and private individuals also. It is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention. Mandamus is issued by a court against a public body जब वो काम अपना सही से नहीं कर रहा है, when they fail to perform their official duties. Prohibition is issued by higher court to the lower court, जब लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड जाके जो अपनी जुरिस्डिक्शन से परे जाके कोई डिसीजन लेता है, देन द अपर कोर्ट कैन इशू द प्रोहिबिशन कि आपको हम प्रोहिबिट करते हैं टू नॉट एक्सीड योर जुरिस्डिक्शन. सर्टियोरी इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ. ये भी हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट्स को इशू करता है. Now, quo warranto is by what authority? It is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person. Now, Article 358 में suspension of fundamental rights which are mentioned in Article 19. Article 358 का मतलब है Article 19 के अंदर जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो जाते हैं, या ऑटोमेटिकली उनका इन्फोर्समेंट रद्द हो जाता है व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज़ इन प्लेस. ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 359 के अंदर ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट, दीज वही राइट्स जो कि स्पेसिफाई किए हैं प्रेसिडेंट ने, बस वो अबॉलिश होते हैं. तो ये दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस. Which of the following factors constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy? तो liberty, committed judiciary, centralization of power, elected government या separation of power. तो separation of power which is mentioned in Article 50 of the directive principle of state policy, judiciary is different from executive. तो judiciary हमारी executive से अलग है. This ensures that there is liberty, क्योंकि जब भी किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी को कर्टेल किया जाएगा बाय स्टेट, देन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स थ्रू देयर रिट जुरिस्डिक्शन बीच में आ सकते हैं, एंड दे कैन इंश्योर दैट लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज सस्टेन्ड इन द डेमोक्रेसी. सो डी इज़ द राइट आंसर हियर.
Now, which of the following is correct? Nehru report had advocated the inclusion of fundamental rights in the Constitution of India. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. Government of India Act 1935 refer to fundamental rights. It is wrong. August offer refer to the fundamental right. This is also wrong. Cripps mission refer to fundamental right. This is also wrong. Nehru report के बाद when the fundamental rights were adopted, it were adopted in the Karachi session of 1931 Indian National Congress का, which was presided by Sardar Vallabhbhai Patel. Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world? Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Now, fundamental rights are justifiable. ठीक है, justifiable कैसे? Mentioned in Article 32, right to constitutional remedies. ठीक है, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट में, मीन्स दिस आर जस्टिसेबल, वेयर एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन जस्टिसेबल. मतलब इनकी इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हो कि हमारे डीपीएसपी को हनन किया गया है या हमारे डीपीएसपी को हमारा डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है वो लागू नहीं किया गया. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 39D में इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन है तो ये डीपीएसपी का पार्ट, बट क्या हमारे इंडिया में इज़ देयर इक्वल पे फॉर वुमेन एंड मैन? नो, इट इज़ नॉट. मैन आर जनरली पेड हायर देन द वुमेन्स. ठीक है, तो इसके लिए आप ये नहीं कह सकते हो वुमेन्स जाएं और ये कहें कि हमें इक्वल पे चाहिए. ऑल्दो ये प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द डायरेक्टिव्स कि स्टेट को ये फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन. ऑल्सो न्यूट्रिशन का लेवल एंड वेरियस डीपीएसपीज आर देयर जो कि स्टेट को अपने प्रिंसिपल्स को इन डीपीएसपी में दिए हुए प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, बट द स्टेट जनरली डज नॉट डू दिस. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल, हमारे पार्ट 3 में मैंशनड है. इट इज़ डेमोक्रेटिक, इट इज़ पब्लिक वेलफेयर, इट इज़ एसेंशियल फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. बिल्कुल सही. पार्लियामेंट कांट मेक अ लॉ अगेंस्ट इट. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो सही. ये सही इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट को एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है विच हैज़ बीन propounded बाय द केशवानंदन भारती केस. इससे पहले क्या होता था कि कोई भी लॉ गवर्नमेंट बनाती थी वो जनरली जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते थे. बट 1973 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंदन भारती केस, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट जजेस की बेंच बैठी एंड देन अ बेसिक स्ट्रक्चर वॉज propounded. अब इस बेसिक स्ट्रक्चर में अलग अलग चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंडिया में इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस को कभी हटाया नहीं जा सकता. लिबर्टी, डिफरेंस, द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी. उसी में फंडामेंटल राइट्स भी थे कि इन चीज़ों पे कभी लॉ नहीं आ सकता जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इनको कभी अबॉलिश नहीं किया जा सकता. तो अकॉर्डिंग टू दिस 5 इज़ करेक्ट, हमारा 1 इज़ करेक्ट. 1 and 5 is mentioned and it is essential for personality development, so C is the right answer. Fundamental rights can be suspended during emergency. Yes, they can be suspended during emergency, but सारे राइट एक सेकेंड, सारे राइट सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 and 21. 358 के अंदर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स अंदर आर्टिकल 19 जो 6 राइट हैं वो आपके ख़त्म होते हैं. एंड 359 के अंदर दोज फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फंडामेंटल राइट. दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन. बिल्कुल. दे आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 3. येस, दिस इज़ ट्रू. दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स. अनलाइक मतलब ये उनके जैसे नहीं हैं. नो, दीज आर लाइक बिल ऑफ राइट्स. ठीक है, तो ये हमारा गलत है. 1, 2, 3 इज़ द करेक्ट आंसर. Under which article of the Constitution fundamental rights have been provided? These are provided from Article 12 to 35.
32 के बाद जनरली जो 32 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, इसके बाद के जो 33, 34, 35 हैं, दीज आर रिलेटेड टू मार्शल लॉ। ठीक है, जब आर्मी का एक्शन होता है, मार्शल लॉ, एंड मार्शल लॉ के रिगार्डिंग जो भी जो लॉज हैं दैट कैन बी मेड बाय द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको बता दिया है ताकि अगर मार्शल लॉ पे आए तो वो भी आप समझ जाओ, दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स ओनली, कोई अलग से उनका आर्टिकल नहीं है। Which article of the Constitution give precedence to constitutional provisions over law made by the Union and the state legislature? It is Article 13. ठीक है, Article 13 makes provisions that pre-constitutional law and post-constitutional law, if it inconsistent with provisions of fundamental right, shall be void to such inconsistency. अब Article 13 में वो भी laws जो सारे pre-constitutional हैं वो include होते हैं, conventions include होते हैं, कस्टम इंक्लूड होते हैं, लॉज इंक्लूड होते हैं। अब कस्टम जैसे ये ट्रिपल तलाक था, ये एक कस्टम था इन इस्लामिक लॉ, दैट वाज आल्सो एंडेड, इसको एंड किया गया। क्यों? क्योंकि इट वाज अ कन्वेंशन अंडर मुस्लिम लॉ, तो उसको भी ख़त्म किया गया। द मेन object of Article 13 of the Indian Constitution is to secure the paramountcy of Constitution regarding fundamental rights. Right to equality is mentioned from Article 14 to 18. Right to equality is given by 14, 15 and 16. C is the right answer. 13 में अभी बताया मैंने, those laws conventions आते हैं जो कि अगर void होंगे उनको वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स एन एब्सोल्यूट लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेटिव पावर? आर्टिकल 14। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? आर्टिकल 14। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? 14। देखो 14 के ना दो कंसेप्ट होते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम यूके या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों आर्टिकल 14 के पार्ट हैं। नाउ नेक्स्ट इज a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following article of the Constitution? So it is Article 14, that is equality before law. Rule of law का मतलब क्या होता है? There should be one act for all and one judiciary for all. Prohibition of discrimination on the ground of religion is a फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर आर्टिकल 15, हमें पता है 14 to 18 कम्स अंडर राइट टू इक्वालिटी, तो 15 हमारा राइट टू इक्वालिटी में आएगा। राइट टू इक्वालिटी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वॉज अमेंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराइजन? तो इट वाज राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या था चंपकम दोराइजन केस, जिसमें प्रोविज़न किया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। नाउ लेट्स सी अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन including private and unaided to OBC and SC/ST is made in? It is made in Article 15(5). ठीक है, 15 is prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex and place of birth. 21, the provision of reservation of OBC is made in the Constitution under which article? It is made under Article 15(4) and 16(4). The right against discrimination है 15 में, and right to equality in matters of public employment is given in Article 16. Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all citizens? We know that it is 16(1) and 16(2).
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, तो equality before law, social equality and equal opportunity is mentioned. Economic equality is given in the DPSPs, it is not included in the state can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political sphere. Among equals the law should be equals and equally administered. तो 14 का हमारा सही है, assertion is true, and जो reason दिया है that follows the assertion. Which of the following enabled the Supreme Court of India to deduce a fundamental rights to equal pay for equal work? It is socialist word used in the preamble. A read with Article 14 and A read with Article 16. So D is true. Which of the following articles read with the word socialist used in the preamble of Indian Constitution enables the Supreme Court to deduce a fundamental right for equal pay to equal work? That is Article 14 and 16 read with the socialist word in the preamble. Under what provision of the Constitution untouchability has been abolished? Under 17. Untouchability, Article 17. Again untouchability, Article 17. Repeated questions है ये. Article 17 deals with the abolition of untouchability. Untouchability 17. अनटचेबिलिटी अगेन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब 17. अनटचेबिलिटी कौन से उसमें आता है? इट इज़ अनटचेबिलिटी इज आर्टिकल 17 विच इज़ इंक्लूडेड इन राइट टू इक्वालिटी. प्रोहिबिशन एंड अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी में बी अचीव्ड बाय ऑल ऑफ द अबव. डी नहीं इंक्लूड होगा, जॉब एंड सर्विस नहीं है, बाकी सब में अनटचेबिलिटी को हम कर सकते हैं. Untouchability is the worst form of structural violence, and untouchability has been practiced in the name of religious sanction. A is the correct answer. Which of the following belongs to a different category? Obviously, Article 14, 15 and 16 is a part of right to equality, whereas Article 19 is right to freedom. So D is the right answer here. Right to freedom 19 से 22 में mention है. Right to freedom Article 19. Right to freedom of press is mentioned in Article 19(1)(a). Freedom of the press is mentioned in Article 19. Freedom of press is mentioned in Article 19(1)(a). Freedom of newspapers is mentioned in 19(1)(a). Supreme Court has held that the hoisting the national flag atop the private buildings is a fundamental rights of every citizen under right to freedom of expression. As a part of right to freedom, which one of the following does not form freedom of assemble peacefully and without arms? Ghirao, official not performing their duties. By which of the following grounds a citizen's freedom of expression may be subject to certain restriction? Unbecoming citizen. बाकी ये तीनों के केस में रोका जा सकता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बट अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट. राइट कौन सा आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन relates to protection of life and personal liberty? That is Article 21. Doctrine of due process of law is mentioned in Article 21, and due process of law का जो doctrine है it was given by A.V. Dicey. Person's right to travel abroad is mentioned in Article 21. Within India is mentioned in Article 19(1)(d). इसमें विद इन इंडिया का राइट है. Which of the following has been recognized as the fundamental right by the Supreme Court of India? Right to shelter, right to travel abroad and right to equal pay of equal work. ये 14 and 16 में भी मेंशन है हमारा, ठीक है. रेड विथ द वर्ड सोशलिस्ट इन द प्रीएम्बल. Now
Next, move to the next question. Which of the following right is available in 19(1)(d) read with Article 21? Right to privacy. Right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty. Which of the following is in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? It is Article 21 and freedom guaranteed in Part 3. The next question is, right to privacy is protected under which article of the Constitution? So the correct answer is 21. Which article of the Constitution of India safeguards one right to marry the person of his or her choice? That is Article 21. Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? That is, capital punishment does not fall under it. Which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during national emergency? The first one is right to reside and settle in any part of the country. Second option is right to life and personal liberty. Third one is right to move freely throughout the territory and right to carry out any profession. So as we know, national emergency के केस में आर्टिकल 20 and 21 ख़त्म नहीं होते हैं. So यहाँ पे ऑप्शन बी जो है हमारा, दैट इज़ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 21. सो बी इज़ द राइट आंसर. The scope of Article 21 of India of the Constitution was expanded to include right to education because of the decision of the Supreme Court in case Uni Krishna versus Andhra Pradesh, that under Article 21, that is right to life, education was added. Elementary education is given under Article 21A of the Constitution. Right to education to all children between the age group of 6 to 14 years is, it is a fundamental right under Article 21A. When was the right to education added through the amendment in the Constitution of India? So it was added on 1st April 2010. Which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? That is right to education. Now assertion and reason वाला क्वेश्चन है. We have to state that जो reason दिया है, it follows assertion or not. The state shall provide free and compulsory education to all children of the age group to 6 to 14 years. बिल्कुल correct है. In a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right. So this is also correct. A इसका correct answer है. Now, which of the following are envisaged by the right against exploitation in the Constitution? So right against exploitation, prohibition of traffic in human beings and forced labor, correct. Right to untouchability, it is not there, it is under Article 17. Protection of the interest of minorities, this is also not true. Prohibition of employment of the children in factories and mines, this is true. So 1 and 4 is correct. The protection of interest of minorities है, ये भी इंक्लूड नहीं होता है. एंड अबोलिशन का आर्टिकल तो हमारा 17 है ही. Now, which provision of the fundamental right is directly related to exploitation of children? It is Article 24, whereas 23 deals with prohibition of traffic in human being and forced labor. Now, the next question is 63. Article 24 of the Constitution of India prohibits the employment of child in factories related to hazardous work. Such prohibition is absolute prohibition. Although सिर्फ hazardous work में ही prohibited है, अदर इंडस्ट्रीज़ में इट इज़ अलाउड. ये मत समझना कि ब्लैंकेट बैन है चिल्ड्रन का, ठीक है, कि उनको एम्प्लॉयमेंट दे ही नहीं सकते हैं. सिर्फ हैज़ार्डस में नहीं दे सकते हैं, एल्स इन अदर फैसिलिटीज़ यू कैन एम्प्लॉय चिल्ड्रन. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64. Which article under the fundamental right is directly related to exploitation of children? That is Article 24. Which one of the following articles of the Constitution deals with the fundamental right related to the exploitation of children? That is Article 24. Child rights are protected in Article 24. The article of the Constitution that provides protection to the accused regarding the conviction from double
ban and self-incrimination is Article 20. Now, an accused of any offense cannot be compelled to be witnessed against himself. Which article of the Indian Constitution provides for this? Article 23 says for this. 21 तो हमारा राइट टू लाइफ है. 74 is related to council of minister to aid and advise president. 22 हमें हमारा है राइट अगेंस्ट डिटेंशन. ठीक है. Now question 69. No person shall be prosecuted and punished for the same offence for more than once. This is given in Article 20. Which article gives safeguard to fundamental rights of the arrested person? तो right against detention is given in 22. Also preventive detention के भी जो भी provisions है it is given under Article 22 only. Now this question is a difficult one. ये तो बिल्कुल ही बेयर एक्ट से पूछा है. तो वन बाय वन इसको देखते हैं. हमें बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. नाउ आर्टिकल 22.1 राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हर और हिज चॉइस. 22.4 है नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन 3 months. 22.2 है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ पर्सन में बी डिटरमाइंड फॉर लॉन्गर पीरियड दैन 3 months. एंड डी में हमारा 22.1 नो पर्सन हु शैल बी अरेस्टेड शैल बी इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट. नो यहाँ पे पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं होती है. दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ मैजिस्ट्रेट. सो ये ध्यान रखना है इधर. तो हमारा सी यहाँ पे नॉट करेक्ट है. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 3 months. 3 months से ज़्यादा कमेटी सेटअप होती है 3 members की. वो इन्फॉर्म करती है फर्दर डिटेंशन के बारे में. अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अ पर्सन कैन बी डिटेन विदाउट ट्रायल फॉर 3 months. Now, when a prisoner makes out of sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. तो यहाँ पे क्वेश्चन इसको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो आप. स्टेटमेंट पढ़ के ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. मतलब ये बोल रहा है कि पैरोल हम डिनाई कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका राइट है. अभी वो जेल में गया है तो सम ऑफ द केसेस तो बने होंगे ना, इसके लिए वो जेल में है. अब ऐसा थोड़ी है अगर ऐसा होने लगा फिर तो कोई भी जेल में जाके राइट उसके इन्फ्रिंज हो रहे हैं उस बेसिस पे वो बाहर आ सकता है. ये तो हो नहीं सकता. तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पे लिखा है पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम अ मैटर ऑफ राइट. कर सकते हैं भाई अगर वो क्रिमिनल माइंडेड है, अगर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है, पैरोल पे बाहर जाएगा फिर किसी का मर्डर करेगा. तो ये तो गलत है हमारा. और स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल. बिल्कुल प्रिजन्स जो होते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट प्लस सेंटर भी इस पे लॉ बनाता है. तो बिल्कुल खुद के लॉज होते हैं स्टेट के. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. राइट टू रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. बिल्कुल करेक्ट है. राइट टू वियर एंड कैरी किरपान बाय 6 दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड. State right to make laws for social reform. This is not correct. Sorry, this is also correct. And right to conversion of religion by people by religious body. Right to conversion is not a right under Article 25. Okay. तो 4 गलत है, 1 2 3 हमारा सही है. So he is the answer here. Under which article of the Constitution wearing of kirpan by 6 is deemed to be as a right to freedom of religion? So अभी बताया it is Article 25. Article 25 of the Indian Constitution refers to freedom of religion. Now next question is the word Hindu in the article does not include Parsis, whereas Buddhist, Sikh and Jains are included. Okay, Sikh, Jain, Buddhist, these are included in the word Hindu. According to Article 25 of the Constitution, right to freedom of religion is not subject to humanism, public order, health, morality. These are the conditions. Now question number 80 है what are the restrictions the freedom to manage religious affair in Article 26 of the Constitution?
अब लॉजिकली इसको सॉल्व करते हैं। पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है। अब नेशनल सिक्योरिटी को तो कोई सेंस नहीं बना रहा ना रिलीजन के उसमें, तो ये तो कट हो गया। एडुकेशन का भी कोई सेंस नहीं बनता, तो 3 हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑटोमेटिकली आंसर डी है। 4 देख सकते हैं, मोरालिटी तो है ही है, हेल्थ कोई ग्राउंड नहीं है, सेक्युलरिज्म कोई ग्राउंड नहीं है, हेल्थ के लिए तो हो सकता है। अभी हुआ तो था ना कोरोना के इसमें, कोरोना के टाइम पे, अभी कोरोना के टाइम में तबलीगी जमात वगैरह ये सब एंड जितने भी रिलीजियस प्रोसेशंस होने थे सब तो बंद हो गए, कुंभ मेला भी नहीं होने दिया गया था, तो हेल्थ के केस में तो बिल्कुल कर सकते हैं। नॉट करेक्टली मैच हमें बताना है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर बिल्कुल करेक्ट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन ये भी करेक्ट है। 26 है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये भी करेक्ट है। 29 इज फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, दिस इज रॉन्ग। वेयरएज 21 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ओके, नॉट करेक्टली मैच फिर बताना है। 23 ह्यूमन लेबर, फोर्स लेबर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बिल्कुल करेक्ट, अभी देखा हमने। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ करेक्ट, तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दिस इज़ रॉन्ग, ऑब्वियसली दिस इज़ आर्टिकल 30। Which article of the Constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institution of their choice? It is Article 30. 19 हमारा right to freedom है, 26 हमारा right to manage religious affairs है, and 29 protection of interest of minorities and educational institutes को manage करना है, it is given in Article 30. Now, under which article of the Indian Constitution it has been provided that all the minorities shall have the right to establish and administer educational institution of their choice? It is Article 30. Assertion and reason वाला क्वेश्चन है। Article 30 of the Indian Constitution does not define the term minority, बिल्कुल सही। The Constitution recognizes only linguistic and religious minorities, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा सही आंसर है। सॉरी, बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि ये ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी होने का इस स्टेटमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। रिट्स जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226। The guardian of fundamental right is judiciary, that is Supreme Court and High Court. Under the Indian Constitution, guardian of fundamental right it is Supreme Court. Guardian of fundamental right Supreme Court, judiciary है। Guardian of Constitution of India, fundamental right Supreme Court। Repeated questions है सारे। Which of the following statement is not correct? K.M. Munshi was one of the members of the drafting committee of the Constitution, बिल्कुल करेक्ट है। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly, 1946 में ये बनी थी। अगर आपने Constituent Assembly वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप एक बार उसको देख लेना, ये तो वैसे ही स्टेटमेंट वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और द पंचायती राज सिस्टम वॉज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द गार्डियन। ऑल्सो फर्स्ट पंचायती राज वॉज इस्टेब्लिश इन राजस्थान, ठीक है, नागौर विलेज था, एमपी वाला नागौर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, राजस्थान में था। एंड सेकंड स्टेट वाज आंध्र प्रदेश। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32? सो फंडामेंटल राइट्स। हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 के अंदर। एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला था, प्रीएम्बल को बोला था, ध्यान रखना। Question 95, Dr. Ambedkar described 32 as the constitution and the very soul of it, and 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental right, बिल्कुल सही। आर रीज़न है, इसीलिए हम 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। रेट्स का इन्फोर्समेंट कौन से उसमें दिया है, आर्टिकल में 32 में दिया है। Which of the following rate is regarded as the greatest safeguard for liberty of a person? Habeas corpus
is related to liberty of person, whereas mandamus सर्शियोरी एंड प्रोहिबिशन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट के पावर्स के रिगार्डिंग है। एंड मैंडेमस इज इश्यूड टू ए पब्लिक बॉडी जो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर रही है। हाई कोर्ट टू secure the liberty of an individual, habeas corpus, which of the following may be filed for protection of right to personal freedom, habeas corpus. Now habeas corpus, let us have the body of mandamus, right to subordinate court, प्रोहिबिशन का हमारा होगा वी कमांड, सर्शियोरी का हमारा होगा हबीज कॉर्पस हमारा होगा लेट अस हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस हमारा होगा वी कमांड, प्रोहिबिशन हमारा होगा राइट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, सर्शियोरी हमारा होगा बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड एंड कोवरेंटो बाय विच अथॉरिटी, कोवरेंटो इज इशूड टू public body. Not correctly matched, habeas corpus is correct, mandamus is correct, prohibition गलत है, कोवरेंटो बाय व्हाट अथॉरिटी सही है। पोस्टमार्टम कोई भी नहीं जाना जाता पोस्टमार्टम के नाम से। जुडिशरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, इट इज़ mandamus. Supreme Court issued it to a person or institution to perform its duty, it is mandamus. 105 में एक बार आप देख लेना इसको मैच करके, इजी क्वेश्चन है ये, इसकी इन्फॉर्मेशन देखना, क्वेश्चन से कंफ्यूज हो जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, दिस इज करेक्ट, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इज रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ मैंशनड इन 22, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इज करेक्ट। Which of the following judgment deals with the fundamental rights? So chronological order में हमें लगाना है। एक गोलकनाथ केसेस है 1967 में हुआ था, केशवानंदन भारती 1973 में हुआ था, ठीक है, मिनर्वा मिल्स 1980 में हुआ था, एंड ए के गोपालन 1950 में हुआ था। तो डी तो सबसे पहले है, डी के बाद हमारा ए है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। Right, what is the position of right to property in India? So right to property is a legal right available to any person. Right to property belongs to which category of the following? It is a legal right. Right to property is a statutory and a legal right. Right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act. बिल्कुल सही, and it is now included in 300A. चलो अगला स्टेटमेंट भी वही है। Right to property was made a legal right under Article 300A Part 12. So both 1 and 2 are correct. Right to property is a legal right. 301 is related to right of property. This is wrong. 300A is related. Right to property is a legal right but not a fundamental right. 300A was inserted by the 44th amendment during the period of Congress. No, it was not Congress. Janata Party की government थी. So only A is the correct answer. राइट टू प्रॉपर्टी कौन से सबमिट हुआ था? 44th, राइट टू प्रॉपर्टी बाय 44th 1978, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे आफ्टर इमरजेंसी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इट वॉज द 44th अमेंडमेंट. Right to property was abolished by 44th amendment. 44th amendment related to property. Right to property deleted from 44th amendment 1978. Which of the following is not a fundamental right? Right to property is not. It is a legal right under 300A. Not a fundamental right. Right to property. It is not a fundamental right. Property, repeated question है, Indian Constitution does not grant which of the following right? तो right to equal shelter कोई right नहीं है.
Which of the following is not a fundamental right granted by the Indian Constitution? Right to settle any part of the country, बिल्कुल सही है, 21 है. Gender equality, बिल्कुल सही. Right to information, गलत है, it is a statutory right, ये 2005 में आया था. ठीक है, right to information. No one can be compelled to sing national anthem. Since it will be violation of right to freedom of speech and expression. बिल्कुल correct. It will be violation of the right to freedom of conscience and practice and propagation of religion. बिल्कुल सही. There is no legal provision obliging anyone to sing the national anthem. बिल्कुल सही. 1, 2, 3, all of them are correct. Which of the fundamental rights are available to citizens but not to aliens? So 15, 16, 19, 29 and 30. These all are available to the citizens only. रेस्ट दोनों को मिलते हैं. अब फ्रीडम ऑफ स्पीच इज आर्टिकल 19. 1 होगा. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज लॉ अवेलेबल टू ऑल, तो 2 तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे. राइट टू माइनॉरिटीज़ सिटीजन्स ओनली, ये भी सिटीजन ओनली, तो 1 and 3 तो हमारा होगा. 4 भी सबको मिलता है, तो ए इज़ द राइट आंसर. नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 19. Equality before law 14, equality of freedom of life liberty 21 and exploitation is under 17. Which of the following right is available to all person? To all person को equal protection of law 14 article. Which of the following rights are not available to all the persons? So B is the correct answer. 2, 3, 4. ठीक है. Equality before law is available to all. Which of the following rights conferred by the Constitution is also available to the non-citizens? 135 का correct answer है ये. Article 32 is available to all. A British citizen in India cannot claim right to freedom of trade and profession. क्यों? क्योंकि it is given in 19(1)(g). ठीक है. In India, if a religious sect community is given the status of a national minority, what special advantages is entitled to? It can establish and administer exclusive educational institution. Correct. The President of India automatically nominates representative of the community to Lok Sabha. बिल्कुल गलत. The President nominates 12 members to the Rajya Sabha and 2 members appoint करते थे President Anglo Indians थे, but this provision has been deleted from the Indian Constitution. ठीक है. सो 2 का तो कोई पॉइंट नहीं है. इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर 15 प्रोग्राम. सो 1 and 3 इज करेक्ट. नाउ द चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 24 में, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन 10 दिसंबर 1996 एंड यूनाइटेड नेशन चार्टर, तीनों में प्रोहिबिट होता है. नाउ राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शैडो. Indian in the context of India, which of the following is correct relationship between rights and duties? Rights are correlative with duties. Certain rights के साथ duties भी आती हैं. You cannot skip your duties and claim your rights. Now, rights are the claim of the state against citizen. बिल्कुल गलत है. rights तो citizens का claim होता है. Now, rights are the claim of citizen against the state. C सही है हमारा. Now last question, right to service originated in Great Britain. Also कुछ फैक्ट याद रखना. जुडिशरी ओरिजिनेटेड इन USA. ठीक है. एंड देन इंडिया ने भी वहाँ से जुडिशरी का कंसेप्ट लिया था. सो सी इज़ द राइट आंसर. विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर. ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद DPSP. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर DPSPs. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो. चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 घटनाचक्र पॉलिटी के नाम से. वहाँ पे आपको बाकी सारे चैप्टर्स मिलेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिवन एंड देन वी विल सॉल्व द MCQs. नाउ कुछ इन्फॉर्मेशन. DPSPs आर मेंशन्ड इन पार्ट 4. दीज आर एक्सटेंडेड फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. याद रखना 51A इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर पार्ट 4A. ऑल्सो DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल. इसको आप क्लेम नहीं कर सकते हो कोर्ट में. ठीक है. यू कैन नॉट क्लेम दैट कि हमारे DPSPs इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो हमें
जस्टिस चाहिए इसके रिगार्डिंग। फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर जस्टिसेबल। नाउ DPSPs कहाँ से लिए गए हैं? सो दीज आर टेकन फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये DPSP ही है जिसमें ये हमें बताया गया है कि इंडियन स्टेट शुड बी वेलफेयर स्टेट एंड दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल की जो पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए इनको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और DPSPs में देखा जाए तो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। वो जब हम लक्ष्मीकांत को कंप्लीट फॉर्म में करेंगे ना तो मैं उसमें बताऊंगा, इसमें ज़्यादा उतने उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। नाउ इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो भी मेंशन है। नाउ द DPSP इज़ मेंशन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इसका जिक्र है। Now 37 deals with the application of the principle contained in this part. These are non-justiciable, ठीक है, embody the concept of welfare state। 38 आर्टिकल बोलता है the state shall secure a social order for the promotion of welfare of people। Now 39A that is NALSA legal services authority, जो भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको कोर्ट्स एंड लॉयर्स प्रोवाइड कराने के लिए ताकि उनके केस लड़े जा सकें। तो 39A वॉज एडेड बाई द 42nd अमेंडमेंट, प्रोवाइड्स फॉर इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, अभी मैंने आपको बताया 3 टाइप के DPSPs हैं, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं क्योंकि गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन फिलॉसफी वॉज मैंशनड ऑन फोकस्ड मोर ऑन विलेजेस पे उनका ज़्यादा ध्यान था, रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान था, तो उसी पे बेस्ड हमारा आर्टिकल 40 है। नाउ राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन क्लास, आर्टिकल 41। पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज 43A, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, दिस वॉज एडेड बाय द 97th अमेंडमेंट, ठीक है। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एडुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years, आर्टिकल 45। Now it is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living to improve the public health, is article 47. Organization of agriculture and animal husbandry is 48. 48 provides for the improvement and safeguarding of forest and wildlife. 49 provides for protection of monuments and places and objects of national importance. 50 provides for separation of judiciary from executive and promotion of internal peace and security, that is the foreign policy। ये हमारी आर्टिकल 40-51 पे बेस्ड है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs इज दीज आर जस्टिसेबल, मतलब दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इन केस ऑफ देयर वायलेशन। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि मेंशन है आर्टिकल 13 से लेके 32 में, ये अगर आपके इन्फ्रिंज होते हैं तो यू कैन गो डायरेक्टली टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये आप बोल सकते हो कि हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है। ऑन दी अदर हैंड DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल, मीन्स इसकी इन्फ्रिंजमेंट में यू कांट गो टू द कोर्ट टू क्लेम दीज राइट्स। दीज आर नेगेटिव इन नेचर, दीज आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। दीज हैव लीगल सैंक्शंस, दीज आर मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शन। दी एम एट इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट एक सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSPs इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। यही कुछ बेसिक डिफरेंस थे। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ DPSP इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी मेंशन, पॉलिटिकल भी ये प्रमोट करते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर पॉलिटिकल पूछा जाए तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ DPSP? टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल करेक्ट है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। टू इस्टेब्लिश है रिलीजियस स्टेट, ये गलत है, यह ऑप्शन हमारा सही है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा इंडियन स्टेट है, इट हैज़ नो रिलीजन। कहते हैं ना हम सेक्युलर हैं, तो सेक्युलर का मतलब ही ये होता है कि द स्टेट डज नॉट हैव रिलीजन ऑफ इट्स ओन।
ठीक है, एंड टू एस्टैब्लिश ए सेक्युलर स्टेट, अभी मैंने बताया. नाउ हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? फॉर्मर इज़ यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज़ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ये तो गलत है. फॉर्मर इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेटर इज़ नॉट, बिल्कुल गलत है. DPSPs भी हमारे पार्ट 4 में मैंशन है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में मैंशन है. DPSPs आर नॉट इन्फोर्सिबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स, बिल्कुल सही है. ये हमारा मेन डिफरेंस है. द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिफेबल. No. With reference to the Constitution of India, the DPSP constitute limitation upon legislative, executive. Neither of them, क्योंकि these are non-justiciable. ये claims नहीं है आपके, ठीक है. claim क्या होते हैं? जो आप बोलो कि ये मेरा है, इस पे मेरा claim है. तो fundamental rights पे आपका claim है, क्योंकि उसके infringement में you can go to courts. These आर दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स जिस पे सोसाइटी को बेस होना चाहिए या जिस पे एक स्टेट को बेस होना चाहिए. तो ये कहीं से भी लिमिटेशन नहीं है अपॉन द लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. ठीक है, तो डी इज़ द आंसर. विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? दे शैल बी इन्फोर्सिबल बाई कोर्ट्स, बिल्कुल गलत है. दे शैल नॉट बी इन्फोर्सिबल, ये स्टेटमेंट हमारा सही है. द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है. दीज आई एक्ट लाइक अ गाइडिंग फोर्स. ठीक है, सो हमारा डी इज़ द राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPSPs आर ट्रू? द प्रिंसिपल स्पेल आउट द इकोनॉमिक एंड socio-economic democracy in the country, बिल्कुल करेक्ट. द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाई द कोर्ट, बिल्कुल सही. सी हमारा करेक्ट आंसर है. द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दी, तो दीज आर इंक्लूडेड इन दी DPSPs contained in part 4. The part of the Constitution of India declares the idea of welfare state, DPSP. Now which part of the Constitution describes the model of welfare state? तो repeated question है हमारा DPSP. The idea of India as a welfare state is found in, it is also found in preamble and fundamental, ये DPSPs. ठीक है, इसमें बोला वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड यहाँ पे जो जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, तो वो वेलफेयर स्टेट से ही रिलेट करता है. तो DPSPs एंड प्रीएम्बल में दोनों में मेंशन्ड है. तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी. सो अभी मैंने बताया ना आपको, सोशलिस्टिक, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, ये तीनों में डिवाइडेड है. The DPSPs of Constitution is taken from the Constitution of which country? So these are taken from Ireland. The DPSPs are borrowed from the Constitution of which country? तो हमारा Ireland. The idea of directive principle has been taken from the Constitution of Ireland. DPSPs are non-justiciable. According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of country? DPSPs. रिपीटेड ही क्वेश्चन है, इसे आप देख सकते हो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हमारा किस चीज़ को वॉयलेट करता है? तो राइट टू इक्वालिटी में तो वेल्थ की कोई बात ही नहीं है, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे. हाँ, DPSPs में हमारी ज़रूर मेंशन्ड है 39 आर्टिकल में. राइट टू फ्रीडम में तो 6 तरह की फ्रीडम की बात की गई है. एंड कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इटसेल्फ मेंशन इन DPSP, तो DPSP इज़ द राइट आंसर. नाउ आर्टिकल 39 में कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम. 39A में है दैट ऑल मैन एंड वुमेन equally have the right to adequate means of livelihood. 39B में है the ownership and control of the material resources of the community are to be distributed as to best serve the common good. Now equal pay and equal wealth 39D में है. concentration of wealth is mentioned in 39C. health and strength of workers, men, women and tender age of the children are not abused and the citizen are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited for their age. This is mentioned in 39E and 39F में भी mentioned है. equal pay of equal work 39D में as I told you mentioned in DPSPs. Now which of the following is included in the DPSP? So equal pay for equal work.
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ ये तो मेंशन नहीं है, पर्सनल लाइफ एंड ये तो मेंशन हमारा आर्टिकल 21 में, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस 20 में मेंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क 39D में मेंशनड है। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज़ लेड डाउन अंडर, तो DPSP आर्टिकल 40 में हमारा पंचायती राज मेंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट governments to organize the village panchayat, so it is mentioned in article 40. Which one of the article direct the state government to organize village panchayat, article 40. पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन किस में है, 40 में। फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत मेंशन इन आर्टिकल, तो 40 में मेंशनड है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम सीधा ही गलत कर देंगे। UCC इज मेंशनड इन आर्टिकल 44। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी इज मेंशनड इन 50। इंटरनेशनल पीस इज मेंशनड इन 51, तो ई होगा इसमें, क्योंकि 40 में मेंशनड है विलेज पंचायत। नो 40 विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क UCC, 44 48 में एनिमल हस्बेंड्री, तो ए इज़ द राइट आंसर। नॉट करेक्ट, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही मेंशनड है। 40 में विलेज पंचायत है, 44 में UCC है, 48 में यहाँ दे रखा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव विच इज़ रॉन्ग, इट इज़ मेंशनड इन आर्टिकल 50। ऐसे मेरे साथ रिवाइज करोगे ना तो कम्प्लीटली आपका ये रिवाइज हो जाएगा, सारे आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड गलत मेंशन है, 39A में है। एनिमल हस्बेंड्री इज मेंशन इट 48, ये भी गलत मेंशन है, हमें करेक्ट बताना है। विलेज पंचायत 40 में मेंशन है, ये भी गलत है। इक्वल पे फॉर इक्वल वुमेन अभी मैंने बताया 39D में मेंशनड है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नॉट करेक्टली मैच, तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव राइटली मेंशनड है। प्रमोशन ऑफ एडुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बिल्कुल करेक्टली मेंशनड है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43A नहीं 43B में है, 43 में ए में है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन दी मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। नाउ 31 देखते हैं, एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। मनरेगा इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एलिजिबल हाउस होल्ड फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 100 years। द राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज इनमरेटेड इन पार्ट 3, ये तो गलत है हमारा, राइट टू एम्प्लॉयमेंट तो कहीं से भी नहीं मेंशनड है, आर हमारा गलत है, ए इज़ द राइट आंसर। मनरेगा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, तो आर्टिकल 43 क्या है हमारा, राइट टू वर्क, तो उस पर 100 days की एम्प्लॉयमेंट मिलती है मनरेगा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वो इंसर्टेड बाई 42nd अमेंडमेंट टू प्रोवाइड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, तो 43A इट वॉज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, which article of the constitution has provision of participation of workers in the management, so this is 43A। separation of judiciary from executive which is mentioned in article 50 of the DPSPs। next is, which one of the following articles of the DPSPs deals with the promotion of international peace and security mentioned in article 51 of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आई होप कि आपको अभी तक याद हो गया होगा ये सब, या याद हो जाएगा चैप्टर एंड होते होते। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन DPSP। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, DPSP से हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, अभी मैंने बताया था 51। Which of the following was not added to the DPSP by 42nd amendment? Now 42nd amendment में 39A आर्टिकल ऐड हुआ था जो नालसा मैंने बताया, ठीक है। देन 43A भी ऐड हुआ था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन 39F है, ये भी ऐड हुआ था।
इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड ये भी ऐड हुआ था। यूसीसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से है, तो सी इज़ द राइट आंसर। विच प्रिंसिपल ऑफ अमंग द फॉलोइंग वॉज एडेड टू द DPSP बाय द 42nd अमेंडमेंट? सो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट 43A है हमारा, ये ऐड हुआ था। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू, सो दलित की याद रखना कहीं पे भी चर्चा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, चिल्ड्रन, ट्राइबल एंड वुमेन के अगेंस्ट में ही बात की गई है। द वर्ड दलित इज़ नॉट मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल्सो ये ध्यान रखना माइनॉरिटी वर्ड भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है। Now next is which one of the following is not a directive principle of state policy? Free education to children up to age of 14. ठीक है, this is not a DPSP. ये जो है ना हमारा up to 14 वाला, this is mentioned in Article 21A of the Constitution, that is right to education. Next देखते हैं which of the following is not a DPSP? Prohibition of the consumption of intoxicated drinks, correct है। Prohibition of slaughter of cow and calves, these all are Gandhian, ठीक है। Protection and improvement of the environment, this is also true। Free education up to 16, this is not mentioned। No. Which of the following is or are included in the DPSPs? Prohibition of tracking in human beings and forced labor, ये तो हमारा गलत है। This is mentioned in Article 23। Prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health is mentioned in DPSPs, Article 47। Consider the following provisions under directive principles of state policy as enshrined in the Constitution of India. The first is securing uniform civil code. This is not a Gandhian principle, हमसे Gandhian principle के बारे में पूछा है। Organization of village panchayat under Article 40 is enshrined, is a Gandhian principle. Promoting cottage industries in rural area, this is a Gandhian principle. And securing for all workers reasonable region and cultural opportunities, this is not. So 2 and 3 is the right answer here. Now question number 47, in which of the following the provision for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found? So these are found in the fundamental duties and DPSPs both. Which of the following is a DPSP? The state shall endeavour to protect the environment. Yes, this is a DPSP under Article 48A. The Constitution is silent in the DPSP about adult education. Which of the following DPSP was added to the Constitution on a later date? Free legal aid under Article 39A was added by the 42nd Amendment. With regard to the नालसा, कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, दिस इज राइट, and issues guideline to the state legal services authority to implement the legal program and scheme throughout the country. So 1 and 2 is the right answer. In India, legal services authority provide free legal services to which of the following type of citizen? So member of other backward classes, ये wrong है, all senior citizen wrong है, 1 and 2 is the right answer. Next is which of the following is not included in the DPSP? So RTI is not included, ठीक है। RTI के लिए it is a statutory act by the RTI Act 2005. Which of the following is a DPSP? So UCC under Article 44 is a DPSP. Identify the item included in the DPSP. So prohibition of consumption of liquor under 47. Prohibition of employment of children in the factories, it is Article 24.
Forced labor is also banned under Article 23. Prohibition of untouchability is under Article 27. So 1 is the right answer. Which of the following is not a DPSP? So abolition of untouchability under Article 17 is a fundamental right. Now the DPSP is a check which is paid on the bank's convenience. Who said it? So it was said by K.T. Shah. With reference to the Constitution of India, consider the following: fundamental rights, fundamental duties, DPSP. Which of the following of India fulfill the National Social Assistance Program launched by Government of India, that is NALSA. So it was mentioned under DPSP, Article 3. Now question 59, in which of the following is or are listed among the DPSPs in Part 4? So equal pay for equal work, 39A. Uniform Civil Code under 40, small family norm is not mentioned anywhere. 3 तो हमारा वैसे ही कैंसिल हो गया. So answer is B. Education through mother tongue at primary level, it is mentioned in 350A, not DPSP. So B is the right answer. With this we have finished the chapter of DPSPs. Now in the next chapter we will do the fundamental duties. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पॉलिटी 2023 घटना चक्र. आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ करेंगे. इसके पहले के चैप्टर्स हैं जो शुरू से यूनियन टेरिटरीज़, फंडामेंटल राइट्स, DPSPs एट्सेट्रा, ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो एंड प्लेलिस्ट में आपको पॉलिटी घटना चक्र के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी. वहाँ पे ऑलरेडी सारी सीक्वेंस में अपलोडेड है. तो लेट्स स्टार्ट. Now the fundamental duties in the Indian Constitution have been borrowed from the USSR, Russian Constitution से. Now these were added on the recommendation of Sardar Swarn Singh Committee through 42nd Amendment Act 1976. ध्यान रखना, fundamental duties were added by the 42nd Amendment, whereas 44th Amendment से right to property was deleted and it was made a legal right under Article 300A of the Constitution. ठीक है. नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd अमेंडमेंट से आई. इट इज़ पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A. ठीक है. 11 ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया गया था बट 10 सबसे पहले इंस्टीट्यूट की गई एंड देन 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वॉज रिलेटेड टू एडुकेशन. नाउ 51A के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आइए देखते हैं. To abide by the Constitution and respect the national flag and the national anthem, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom, to protect the sovereignty, unity and integrity of India, defend the country, promote the spirit of common brotherhood amongst all people of India, to preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, and to safeguard public property, to strive toward excellence in all spheres of the individual and collective activity. Now, जो 11 duty थी which was added by the 86th amendment, this was who is a parent or guardian to provide opportunity for education to his child between 6 and 14 years of age. It was added by the 86th amendment act. Now let's do the questions. Fundamental duties के regarding which of the following statement are true? A legislative process have been provided to enforce these duties. गलत है. There is no legislative process and it is non-enforceable. Non-enforceable. Optional है ये. ठीक है. मतलब इसकी infringement में you can't go to the Supreme Court and claim your fundamental duties on that. And they are correlative to legal duties. No, these are not. These are optional. Although the Parliament by appropriate law can impose this on public through a law, but अभी तक ये legally enforceable नहीं है. The provision relating to the fundamental duties in the Constitution of India were added on the recommendation of सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी. बलवंत राय कमेटी के रिकमेंडेशन से पंचायती राज was given constitutional status
बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट। एंड एक और चीज़ याद रखना, 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपैलिटीज़ वेयर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है। Now, which of the following committees recommended the inclusion of fundamental duties in the Constitution? So it was Swansingh Committee. Fundamental duties were incorporated on the recommendation of Swansingh Committee. Which amendment included the fundamental duties of India? It was 42nd Amendment. Now, the fundamental duty to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity in India, integrity of India, is mentioned at number 3. ठीक है। The first one is to abide by the Constitution and respect its ideal, institution, and the national flag, national anthem. B is, second one is the cherish the noble ideas which inspired our national struggle, and third is the to protect and the sovereignty, unity, and integrity. Now, when were the fundamental duties mentioned in the Constitution? By the 42nd Amendment. Under which article of the Indian Constitution provision for fundamental duties has been made by the 42nd Amendment Act? So 51A से, ठीक। 51 is DPSP, ध्यान रखना। DPSP कौन सा? तो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड। एंड DPSP is part 4, whereas fundamental duties is part 4A. When were the fundamental duties incorporated in the Constitution? 1976. In which year fundamental duties of citizens were introduced? So 42nd Amendment, 1976. Fundamental duties are mentioned in which part? 4A में mentioned है। Fundamental duties are mentioned in which part? 4A. So this is a nice question, ध्यान रखना। Which of the following were the members of Swansingh Committee? So A, B एंड D। आइए देखते हैं। टोटल 12 मेंबर्स थे सरदार स्वर्ण कमेटी में। स्वर्ण सिंह वॉज द चेयरमैन। AR अंटुले, SS रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VS शाहिद मोहम्मद, VN गडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, दिनेश गोस्वामी, वसंत साथे एंड BN बनर्जी। ठीक है। दीज वेयर दी मेंबर्स। टोटल 12 मेंबर्स वेयर देयर इन दी स्वर्ण सिंह कमेटी। By which constitutional amendment 10 fundamental duties were added in the Indian Constitution? 42nd. Fundamental duties are enumerated in part 4A. Which article of the Indian Constitution enumerates fundamental duties of Indian citizen? 51A. The 10 commandments which were added by the 42nd Amendment Act in Constitution of India are called as fundamental duties, part 4A. Now, which of the following amendment acts is related to fundamental duties? 42nd. Fundamental duties were incorporated in Constitution by the 42nd Amendment. 42nd Amendment has incorporated into Constitution of India a new chapter on fundamental duties. Which of the following statement regarding fundamental duties are not true? So, they can be enforced by writs. तो ये स्टेटमेंट हमारा नॉट ट्रू है। क्यों? क्योंकि रिट्स कैन बी इशूड फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट आर इन्फोर्सिएबल। बट मैंने बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट इन्फोर्सिएबल, तो रिट हम नहीं इशू कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है। दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, बिल्कुल सही है। दे कैन बी यूज फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिगुअस स्टेट, बिल्कुल सही है। The performance of any particular duty comes within the sphere of constitutional law which court has to decide, बिल्कुल सही है। They can be enforced by writ is not true. Now, under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? To vote in general election, this is not a fundamental duty. To abide and respect under the provisions of Article 51A is concerned to the Constitution, that is fundamental duties. Which of the following is a fundamental duty? Separation of executive from judiciary from executive. This is Article 50 of DPSP. To value, preserve the rich and culture and rich heritage of our composite culture. Yes, this is a fundamental duty. Free and compulsory education is Article 21A, fundamental right है हमारा।
Prohibition of untouchability is also a fundamental right under Article 17. A fundamental duty of a citizen does not include to protect the natural environment. बिल्कुल है. Cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle. बिल्कुल. To strive towards abolition of untouchability. अभी बताया. This is Article 17 of the fundamental rights. Right to equality. Now, which of the following is not a part of fundamental duties under Indian Constitution? Organized village panchayat. This is a DPSP under Article 40. Which of the following duties has been prescribed by the Indian Constitution as fundamental duties? Pay income tax तो नहीं है. Defend the country है. Preserve the rich heritage of our composite culture बिल्कुल है. 1-3 है हमारा. ठीक है. Safeguard public property भी है. तो 1, 3 and 4 is right. Fundamental duties कौन कौन सी है? To preserve the rich heritage of our composite culture. This is true. Protect the weaker section from the social injustice. ये mention नहीं है. Develop the scientific temper and spirit of inquiry. बिल्कुल है. Strive towards excellence in all sphere of the individual and collective activity. बिल्कुल है. तो 1, 3 and 4 is right. Now, protection of which of the following is a fundamental duty? So, protection of wildlife is a fundamental duty. It shall be every duty of the citizen to protect and improve the natural environment. This is Article 51A. Which of the following is incorrect? Fundamental duties are the part of fundamental rights. बिल्कुल सही है statement. मतलब statement गलत है. Option सही है. It is not a part. Fundamental right is enforceable in court, whereas fundamental duties is not enforceable in court. Which of the following is not a fundamental duty? तो रिस्पेक्ट नेशनल एंथम सही है. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है. टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज. इट इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट तो बिल्कुल है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. रिपीटेड क्वेश्चन है. इट इज़ अ DPSP under Article 49. Now, which of the following is not provided in Part 4A? Respect the national flag. बिल्कुल है. Promote spirit of brotherhood amongst all people of India. Yes. To respect our parents and teachers. Nowhere mentioned in the fundamental duties. तो C हमारा आंसर है. Under the Constitution of India, which of the following is not a fundamental duty? To vote in public election is not a fundamental duty. Now, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5 को हमें मैच करना है. हमें बताना है which is not correctly matched. तो Part 5 fundamental duties बिल्कुल सही, क्योंकि fundamental duties is mentioned in Part 4A. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision under fundamental duties. Now, how many fundamental duties are there in Indian Constitution? So there are 11. 10th were added by the 42nd Amendment, whereas 11th one जो कि education से related है, it was added by the 86th Amendment Act. Now, to foster, ये हमें मैच करना है. To foster respect for the international law, to have compassion for living creature, we have to match this. So, foster respect for international law mentioned in Article 51C. To have compassion for living creatures is mentioned in 51AG. To develop spirit of inquiry and reform is mentioned in Article 51AH. To separate judiciary from the executive and the public state service, this is a DPSP mentioned in Article 50. तो D का हमारा 3 है. So B is the right answer. With this we have finished our chapter of fundamental duties. कल से we will do our next chapter. Thank you.